Hello guys, welcome back to the live stream, and today we are going to play Genshin Impact and Honkai Star Rail. Because Honkai Star Rail में आज अपडेट आया है और मैंने स्टोरी नहीं की है, तो मैं सोच रहा हूँ स्ट्रीम पे स्टोरी करेंगे उसकी भी. मेरा आज प्लान है कि पहले हम फुरीना की स्टोरी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको खत्म करेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड माय कमीशन अर्लियर, बिकॉज ताकि मैं स्ट्रीम पे फुरीना की स्टोरी कर सकूं. एंड उसके बाद चूंकि आज लास्ट दिन है हमारे इवेंट का, तो आज इवेंट के सारे पार्ट्स खुल चुके हैं, तो आज हम इवेंट पूरा कंप्लीट करेंगे. उसके बाद जाएंगे होंकाई स्टार रेल में, और होंकाई स्टार रेल में ट्रेल ब्लेजर मिशन करेंगे. एंड लेट्स सी क्या स्टोरी अच्छी है या कैसा है. विल एक्सपीरियंस इट टुगेदर. एंड स्ट्रीम पे एज ऑलवेज गाइज मजा आएगा आप लोगों से बातचीत करने में एंड एंजॉय करने में. सो थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग इन. जितने बंदे तक स्ट्रीम पे आए हो गाइज लाइक कर दो गाइज स्ट्रीम को. जितने स्ट्रीम पे नहीं आया गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स जंप इनटू द गेम एंड चलते हैं. सबसे पहले आप लोग की चैट पढ़ते हैं एंड उसके बाद जाएंगे गेम के अंदर एंड गेम को एंजॉय करेंगे. तो हमें दिख रहा है सबसे पहले आज स्ट्रीम पे अंश आए हैं. तो हेलो अंश, वेलकम टू द स्ट्रीम. कचिंग का पिक खतरनाक है, धन्यवाद अंश. हेलो सरेगी, वेलकम टू द स्ट्रीम. नमस्कार. आज 5 पुल कलेक्ट किया, कितना प्राउड फील कर रहा है 5 पुल कलेक्ट करके. हैं सरेगी तू? बस 5 किया जबकि कलेक्ट सिर्फ. आज के मैच में समी ने तबाही मचा दी 7 विकेट लेकर. तबाही नहीं, पूरा गेम बदल दिया, मैं तो ये बोलूंगा टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि एक पॉइंट में ना जब उनका सेकंड थर्ड और फोर्थ बैटर एक्चुअली पार्टनर से बना चुके थे, पूरा सेटल हो चुके थे, उस टाइम लाइक कोई विकेट नहीं निकाल पा रहा था. और समी आके पहले ओवर में ही विकेट निकालना, वो भी एक नहीं दो दो लाइक बैटर्स का. इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज फिफ्थ और लाइक थर्ड वाला प्लेयर जो था उनको लाइक डिसअसेंबल कर दिया उसने, पूरा उनके मेंटली हिला दिया था. तो मेरे हिसाब से समी को ही मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, बिकॉज क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूशन किया है जितना कोहली ने किया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कुछ ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन किया है उसकी पारी से. मेरे को लगता है समी को ही मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच. बट लेट्स सी क्या होता है, किसको देते हैं ये लोग. वैसे ऑलरेडी आ चुका होगा नाम मैन ऑफ द मैच का. अमन, वेलकम टू द स्ट्रीम अमन. इंडिया विंस, ये यस अमन. एंड फाइनली अब सिर्फ एक पड़ाव रह गया है, विच इज फाइनल्स फॉर अस. So let's hope so we will win finals, you know. हेलो डाउन गेमर, वेलकम टू द स्ट्रीम. आज समी ने कोहली के सेंचुरी खा गया. नहीं नहीं भाई, कोई कुछ नहीं खाया भाई उसने, पता है. बस अपना जो लाइक जो एक लाइक खुद से मतलब कंट्रीब्यूशन जो कहते हैं ना, लाइक कि मतलब फुल डेडिकेशन दिखाना और सब कुछ सही करना, वो समी ने किया है जो चाहिए था टीम को. नहीं तो सिराज और क्या कहते हैं जडेजा ने ऑलमोस्ट हिला दिया था, इंडिया को ऑलमोस्ट मतलब हरवाने की कगार पे डाल दिया था. तो मेरे ख्याल से समी समी कुलदीप और क्या कहते हैं तुम्हारा बुमराह, तीनों ने लाइक काफी अच्छे से संभाला है टीम को. लेकिन कोई समी का कैच की बात नहीं करेगा. नहीं, कैच वो चलता है अमन, पता है जब वो, क्योंकि देख कैच तो उससे भी छूटा है, क्या कहते हैं तुम्हारे कैप्टन से, क्या कहते हैं रोहित से छूटा है. उसने खुद उसकी लाइक उसकी आंखों में लाइक रोशनी पड़ गई थी, इसलिए छूट गया था. तो सेम उसके साथ भी हो सकता है, क्या कहते हैं समी के साथ. बट ठीक है, कैच छोड़ने से कुछ नहीं होता है, एक कैच छोड़ने से उसने वो पूरा रिकवर भी कर दिया. दैट्स द बिगेस्ट थिंग वहां पे, कि पूरा उसने कर दिया है. एचएसआर की कहानी बेकार है. देखो अंश, हमारे लिए स्पॉइल मत करो, हमको नहीं पता, हमने छुआ नहीं है एचएसआर सुबह से, सिर्फ फार्मिंग की है. मुझे करने दो, पहले मुझे पता लगाने दो कैसी स्टोरी है. हेलो फ्रैगा, वेलकम टू द स्ट्रीम. बाय बोल के जा रहा है फ्रैगर, ये क्या मजाक है. और आईसी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दिया तूने. क्या बात है, क्या बात है. लगता है दूसरे गेम्स में बिजी हो गया या दूसरे स्ट्रीमर मिल गया फ्रैगर को आजकल. गाइज लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाए हैं. एंड लेट मी नो इन द चैट कि हु डू यू थिंक इज द टुडेज गेम चेंजर, एंड किसको मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच आज के मैच का. एंड आई थिंक मैंने चैट सबके पढ़ ली है. किसी की चैट बची हो तो बता देना मुझे, ठीक है. हाँ, स्ट्रीमर ही बोल दो मुगेत्सु, सही बात है. वेलकम टू द स्ट्रीम मुगेत्सु. लेट्स सी ना किसको दिया है इन्होंने मैन ऑफ द मैच. ऑलरेडी निकल आया होगा मेरे हिसाब से. देखते हैं किसको दिया होगा. मेरे को कोहली ही लग रहा है. नहीं, समी को ही दिया है इन्होंने मैन ऑफ द मैच. कसम से बता रहा हूँ, इन्होंने मेरे को थोड़ी देर के लगा कोहली को देंगे ये लोग, बट एक्चुअली में समी को ही दिया है मैन ऑफ द मैच इन्होंने. जेंसिन प्यार है, जेंसिन प्यार है मैं नहीं, लेकिन स्ट्रीमर तो चेंज हो सकता है फ्रैगर, इसलिए हम पूछ रहे थे. क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज हो चुकी है, इंटरेस्ट भी तुम्हारा चेंज हो चुका है. जिस तरह से तुम हाय बोल के बाय बोल के निकल रहे हो,
वो हमको दिख रहा है फ्रैगर यहाँ पे। गाइज लाइक कर देना जो लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितना स्ट्रीम बनाए। मुझे स्पीड रन करना पड़ेगा आज इवेंट का, क्योंकि आज इवेंट का लास्ट दिन है। एंड आई थॉट अभी भी एक वीक रहेगा, लेकिन इन्होंने काफी टाइम कंस्टेंट रखा है इवेंट को, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। देखते हैं क्या है इवेंट में, क्या करना है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, छुआ तक नहीं है मैंने अभी तक इवेंट। एंड सबसे पहले हम लोग फुरीना की स्टोरी खत्म करते हैं, उसके बाद इवेंट करते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे तो इवेंट पहले कर लेंगे, फिर फुरीना की स्टोरी करेंगे, क्योंकि फुरीना की स्टोरी ऑलमोस्ट एंडिंग पे थी। सो आई एम थिंकिंग कि उसको खत्म कर लें, इसलिए मैं आज लाइक दोनों करूंगा, HSR और होंका क्या कहते हैं जेंशिन दोनों ही खेल रहा हूँ। इसलिए मैं कमीशन पहले कंप्लीट करके आ गया था और सारे कंडेंस कन्वर्ट करके आ गया था कि लाइक आज खत्म करना है इस फुरीना की स्टोरी। मेरा मजाक उड़ाया गया है। स्ट्रीम पीछे करके कौन देखता पहले ये बता सरेगी मुझे ना भाई। अगर देखूंगा तो आपको ही देखूंगा, वरना किसी को नहीं देखूंगा। रहन दे फ्रैगर, लोगों के मुंह से सुनने मिलता है कि फ्रैगर आज यहाँ देखने मिला, आज फ्रैगर वहां देखने मिला। क्या छूने की उम्र में इवेंट छूने की बात कर रहे हो? मतलब क्या छूना है पहले ये बताओ हमें उमुगेत्सु इस उम्र में, ये बताओ पहले उमुगेत्सु तुम्हारा मतलब क्या है? पहले इवेंट देखना है तुम लोगों को, चलो इवेंट देख लेते हैं। मैं वैसे फुरीना का स्टोरी करने का सोच रहा था, बट सिंस यू गाइज आर टेलिंग मी कि पहले फुरीना का क्या कहते हैं इवेंट कर लो, तो इवेंट कर लेते हैं। और आज गाइज आई थिंक रीसेट पे अबिस भी आ रहा है, सो दैट्स अनदर गुड थिंग फॉर यू गाइज कि कल या फिर मतलब रात में ही तुम लोग के लिए कुछ नया करने को रहेगा गेम में। एंड आई थिंक परसों एक और न्यू इवेंट आ रहा है गेम में, बिकॉज आई सॉ उसका टाइमर आ चुका है। सो सही है, बड़ा इवेंट आ रहा है आई थिंक वो वाला। तो जिनका लाइक फुरीना का वेपन नहीं निकला ना, उनका फुरीना का वेपन निकल जाएगा प्रोबेबली अभी। यप 2 आवर में अभी रीसेट है। मैं वही चेक करने वाला था, मैं भूल गया था क्या चेक करने जा रहा था मैं, फिर भूल गया था। तूने याद दिलाती है मुझे। 2 घंटे में अभी रीसेट है, बट सैडली हम लोग कल ही कर पाएंगे अभी, या कल ही देख पाएंगे अब इसको। सुजा भाई माय फुरीना 30 के HP 62 150 के अच्छा है फ्रैगर। आई एम ऑन 74 PD। ड्रैगन स्पाइन 100% एक्सप्लोर। तो क्या हुआ सरेगी बस, लेकिन हम वो बोल रहे हैं 5 पुल। वैसे तुमको लग रहा है 100% एक्सप्लोरेशन हुआ है ड्रैगन स्पाइन का, लेकिन 100% नहीं हुआ होगा टू बी ऑनेस्ट सरेगी। बिकॉज मेरे को 100% ड्रैगन स्पाइन के लाइक 2 साल बाद भी ना ड्रैगन स्पाइन से लाइक 15-20 चेस्ट मिले थे। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि तेरा को लग रहा है कि तेरा 100% एक्सप्लोरेशन हो गया है, लेकिन 100% एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है तेरा। क्योंकि वहां पे वो नहीं वर्क करता ना, तुम्हारा चेस्ट फाइंडर वर्क नहीं करता है, सो तुमको पता नहीं चलता, इसलिए एक एक कोना एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड आई हैव डन एवरी सिंगल चेस्ट एक्सप्लोरेशन देयर, एंड एवरी सिंगल कोने तक मैं गया हूँ, इसलिए मुझे पता है वहां पे बहुत चेस्ट है ड्रैगन स्पाइन पे, और उन चेस्ट से प्रीमो भी निकलते हैं। तो तुमको लग रहा है 100 है, लेकिन 100 नहीं हुआ है ड्रैगन स्पाइन ट्रूली में। मेरा निकल गया वेपन फुरीना का, देखा मैं अमन डिस्कॉर्ड पे, बोला तो मैं कांग्रेचुलेशंस तेरे को। सुजा मेरा अबिस कर दो, पहले मैं खुद का कर लूं वंस, फिर देखेंगे हम लोगों का करना है कि नहीं करना है। नहीं, पहले जितने चेस्ट थे वो सब खोल लिया, 233 गाइड से किया। गाइड वाले भी थोड़ा बहुत मिस कर देते हैं सरेगी वो लोग। पता है कौन से चेस्ट मिस करते हैं सरेगी? लाइक तुमको गाइड वाले लाइक बताएंगे कि पजल वाले बता देंगे, लेकिन एक जो छोटे मोटे पजल रहते हैं ना, जैसे तुम्हारा जैसे उस दिन बोला था मैंने कि एक व्हाइट कलर का एरो आता है जो कि तुम्हारा फाउंटेन में भी मिलता है देखने को, वो वाला एरो वाला एक्चुअली वहां पे स्नो में दिखता नहीं है, तो वो सब छूट जाते हैं। तो उसकी वजह से तुम्हारा एक ना एक चेस्ट रह गया होगा, मैं पक्का लिख कर दे रहा हूँ। मेरे को मजा आया HSR में, वही है चेस्ट मस्त, फाउंटेन में ज्यादा लेवल क्वालिटी की चेस्ट है, मस्त था भाई कट सीन। सुजा भाई राइडन वेपन निकालूं? निकाल अमन, तू तो तूफानी कर रहा है आजकल, तू तेरे को जो निकालना हो निकाल, मैं आज मना नहीं करेगा तेरे को, बस अकाउंट मेरे को दे देना निकालने के लिए। चलो देखें इवेंट में क्या है गाइस, मैंने इवेंट देखा नहीं है। एंड आई सी एवरीबॉडी इन द चैट इज प्रीटी हैप्पी, इंडिया की विन के बाद से। Sensory trial. The turbulence under circuit respond to thunder roar. After you trigger electro charge reaction, you will gain sufficient buffs to use this
वाइडन योर एडवांटेज इन द बैटल। कंप्लीशन टाइम, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक, लीस्ट स्ट्राइक, ब्ला 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 ब्ला। ओके, यहाँ पे मेन अपोनेंट में तुम्हारे आर्माइड्स हैं। रून चैलेंज और फाइनल, अच्छा रून चैलेंज और फाइनल चैलेंज में क्या डिफरेंस है? सीम्स लाइक हाइड्रो यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, देख के ऐसे ही लग रहा है। ट्रिगर 30 इलेक्ट्रोचार्ज रिएक्शन इन टोटल। ओके, एंड मैं अपने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन कैरेक्टर की लिमिटेशन दे रखी है इन्होंने। दिक्कत नहीं है लेकिन, क्योंकि मेरे पास न्यूबलेट है। सेलेस, क्या हाल है? बढ़िया हाल चाल है एलिमेंटलिस्ट, तुम बताओ क्या हुआ? सेलेस क्यों बोल रहा है भाई? सुझा भाई, हु बेटर है लोचा, लोचा बोल रहा है, इज दैट ट्रू? मेरे को नहीं लगी, बिकॉज लोचा के टाइम पर एक्चुअली बहुत सारे कॉन्स नहीं देखने मिले थे। इसके हाव हाव के टाइम में एक्चुअली काफी ज्यादा कॉन्स देखने मिल रहे हैं हमें हाव हाव के। एंड एनर्जी का इशू भी है हाव हाव पे, तो मेरे को नहीं लगी उतनी खास हाव हाव। हुआ जो भी है, इंडिया को पहले बॉल करना चाहिए था, जब मजा आता। देख घंटा सरेगी, घंटा साले जीत गई, फिर भी सरेगी को प्रॉब्लम है। बताओ गाइस, बताओ। Ancient Ruin can aid you in this challenge. 3 Ancient Ruin lie dormant in the each challenge. Interact with them to begin Ruin challenge. Completing said challenge to enhance the effect of Leyline disorder. There is a mystery portal in the trial area. Use them to teleport between 2 fixed points. मेरे को समझ में नहीं आया क्या है ये, मैंने आधा मिस कर दिया। क्योंकि दिखेगा क्या चैलेंज क्या है, मेरे को तो यही नहीं पता है। अच्छा, टाइम लिमिट है क्या? एक्टिवेट 3 एंशिएंट रूइन। सूझा मेरे को नाविया निकालना, जब आएगी तो पुल जीता रहा हूं। कर ले सेव पुल्स में, कर देगा, उसमें क्या है? तू देगा तो मैं पुल तो जरूर करेगा, ऐसा तो नहीं है। अरे व्हाट द हेक, ये क्या है? हेलो, Solidify. Right here. Emerge. Right now. Be sanctified. ये रूइन चैलेंज कंप्लीट हो गया होगा ना हमारा? रोमांचक मैच होना चाहिए था, जीत तो रही थी इंडिया। कुछ भी रोमांचक नहीं भाई, ये बंदा बोल रहा है रोमांचक नहीं था मैच इंडिया का। बताओ भाई, लोग हम लोग भाई 30th ओवर जब चल रहा था, लिटरली हम लाइक मन उठ गया था कि जो उस टाइम ऐसा लग रहा था अब तो लाइक जीत जाएगी न्यूजीलैंड। ये बंदा बोल रहा है रोमांचक नहीं था मैच। बहुत सही सरेगी, बहुत सही। सुजा भाई, अर्ली रिंगवांग अभी आ गई आज, कॉन्ग्रेचुलेशंस डाउन गेमर। अगर मेरी राइडर नहीं निकली तो बाय चांस मैं शाओ को लिए जाऊंगा। शाओ इज नॉट वर्थ पुलिंग। जाने देना सरेगी उसको, कहे ज्ञान देता है। मांगा क्या उसने ज्ञान तेरे से? नहीं मांगा ना, जाने दे। Quake! Order guide you. Come on out. Emerge. Oz, reveal thy... मेरे को वो कैसे दिखेगा कितने इलेक्ट्रोचार्ज रिएक्शन हुए हैं? करंट 11 टाइम्स है। ओके, अरे वो मजा जैसे लोग बैटिंग कर रहे हैं हो और फर्स्ट ओवर में 10-12 रन चाहिए, वो वाला। अरे वो मजा जैसे लोग अरे तो वो लोग कोशिश कर रहे थे पूरी, तुमको क्या लगा तुम वो मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे? वो लोग भाई वो मारने की कोशिश कर रहे थे वो न्यूजीलैंड वाले, बट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इसी वजह से मौका नहीं बन रहा था उनको। बीच में जो मारा है ना उन्होंने, बाद में जो थर्ड फ्लोर प्लेयर आए थे, गेम ऑलमोस्ट चेंज कर दी थी उन्होंने।
और वैसे भी फर्स्ट इनिंग में इतना तो मारा है हमारे बैट्समैन ने, बोल रहा मजा नहीं आया देखने में। I have used Xiao only and that was the time when I got him. After that I haven't used him. यार मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, सेना अच्छी या फिर गानियो। गिल के लिए बुरा लगा गिल के लिए दिल से बुरा लगा एक्चुअली में। उसके सामने सब 100 करके चलेगा, गिल बेचारा रह गया 100 करने से। मेरे को समझ में नहीं आया बीच में केएल राहुल क्यों आया था, गिल क्यों नहीं आया था अभी भी। Right here, right now. Odds reveal. Let the mighty be humbled. Silence. Pressure waves and raise a storm. Solidify. Right here, emerge. Right here. Where do you think you're going? As you wish. Settle down. हो गया होगा ना, 51 टाइम्स हो गए रिएक्शन टोटल यहाँ पे। Why are you using ट्रायल कैरेक्टर? बिकॉज हमारे खुद के कैरेक्टर लिमिटेड है ना, एलिमेंटलेस। उन्होंने सारे कैरेक्टर थोड़ी इनेबल करके दिया हमको, लिमिटेड कैरेक्टर को दिया है चॉइसेस वहाँ पे। इसी वजह से हमको लाइक ये यूज करना पड़ रहा है ट्रायल कैरेक्टर्स। एंड नॉट बैड एक्चुअली, ट्रायल कैरेक्टर वर्क कर रहा है मेरा, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग आई एम फाइन विद इट, आई डोंट केयर। ओके यहाँ पे क्रायोज हैं एंड रूइंड गार्ड ड्रेक्स वगैरह हैं। एक सेकंड, यहाँ पे करना क्या है? आफ्टर कैरेक्टर चार्ज अटैक हिट्स अपोनेंट पार्टीज क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज विल बी इंक्रीज्ड एंड टोटल चार्ज अटैक यहाँ पे 40 टाइम्स करना है। ओके यहाँ पे एक्चुअली देखो ना, ये देखो मेरे खुद के कैरेक्टर लिमिटेड दिए है इन्होंने। घंटा क्या इस्तेमाल करूँ यहाँ पे चार्ज अटैक में? क्या ये क्या ऑप्शन दिए है इन्होंने, मेरे को ये जानना है। मतलब ऐसा कोई करता है क्या? मतलब ये क्या है भाई, मेरा कैरेक्टर ही नहीं है यहाँ पे। चॉइसेस ही नहीं दिए हैं भाई इन्होंने। मेरे को लग रहा है ज्यादा डैमेज डील नहीं करना है हमको। मैं ट्रायल कैरेक्टर इसलिए रख ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा कम डैमेज करके काम चलाना होगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो एनिमी मर जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्रिट रेट क्रिट डैमेज इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे। जब मैं यही बात बोल रहा था तो मेरे को बोल रहे थे नहीं करूंगा मैं ट्राई। अरे तो मुझे क्या पता था कि लिमिटेड कैरेक्टर दिए इन्होंने, मैंने तो देखा भी नहीं था खोल के। तुम ऐसे हवा में बोलोगे तो मुझे मालूम थोड़ी चलेगा एलिमेंटलेस। मेरे को पता नहीं था, मेरे को जब अभी मालूम चला तो मैं समझ रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। Stabilize. Let's light it up! Fall before Uma, me. get them! Step right up. That won't work. Yeah. Duh. A round of applause. Huh? Out of the frying pan, it's And voila! मैं उल्टा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। लेने को जैसे यूज करते हैं वैसा यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। Will do. Cut down. लेकिन स्किल गलती से पहले मार दे रहा हूँ, स्किल बाद में इस्तेमाल करते हैं चार चार्ज अटैक के बाद। I only used to watch cricket when there was a Dhoni, Yuvraj, Harbhajan Singh, ईशान शर्मा, and that was OG days. But अभी भी अच्छा है दैट, पता है। नाउ मतलब लोगों को ऑब्वियसली मतलब प्लेइंग 11 तो चेंज होना ही होना है ना कभी ना कभी, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। लेनी आई थिंक खुद का वेपन इस्तेमाल कर रहा है वो। नहीं ये रॉयल बो
एक सेकंड, ये 4 स्टार बो, ये रॉयल बो इस्तेमाल कर रहा है लेनी। व्हाट? मैं सोचा लेनी खुद का बो इस्तेमाल कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्या क्रिट रेशियो दिया इन्होंने? 59, 126, 220 एनर्जी रीच। नहीं, ये तो मैं खुद का देख रहा हूँ। 71, 91, 135 है। सही है बच्चों। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But पता है। टास्क कंप्लीट करना है, वही देख रहा हूँ मैं। 40 टाइम्स है, ज्यादा है अभी भी नंबर। Solidify. Nice and spicy. Hey, yeah. Everybody stand back. Killjoy. We don't need to catch that. Flash frost. Cooked food. Disgusting. यार मुझे ऐसा लग रहा, पता है यहाँ पे मैंने गलती कर दी। अब यहाँ चार्ज अटैक में ज्यादा मार नहीं पाया, तो मेरा 18 ही चार्ज अटैक हुआ है। 40 करना है चार्ज अटैक। अभी यहाँ गलती कर दी मैंने, आई थिंक शांगलिंग की अल्ट इस्तेमाल करके है। नहीं भाई, अभी उभरती हुई पर्सनैलिटी है हमारा समी। हल्के में ले रहे हो समी की पर्सनैलिटी को, बुमराह की पर्सनैलिटी को। व्हाट अ थंबनेल ब्रो, धन्यवाद थैनोस, वेलकम टू द स्ट्रीम थैनोस। अभी क्या सुना सूझा के मुंह से? हमारे मुंह से? जस्ट अभी ये इवेंट करके आ रहा हूँ कंप्लीट। मैं भी अभी चालू किया हूँ। सो मेरे को मालूम नहीं था कि एक्चुअली आज लास्ट डे है। मेरे को तो एक बंदे ने बताया, तब मेरे को मालूम चला। मेरे को लिटरली दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि आज लास्ट डे है इवेंट का। कसम से बता रहा हूँ। वेट व्हाट? वेट, मैं सही वाले में तो गया था ना? अच्छा, मैं उल्टे में घुस गया वापस से। हाय चार्जर वाईडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये बंदे ने कचिंग को अश्लील बनाया है। मैंने क्या बनाया है? ये गूगल को बोलो, मेरे को मत बोलो ये सब। जोंगली से चार्ज अटैक मारना यही रह गया हमारी जिंदगी में। बहुत सही, यही रह गया हमारी जिंदगी में। जोंगली से चार्ज अटैक मारे हैं। Stabilize. Solidify. मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं मारेगा ही नहीं तेरे को, मैं चार्ज अटैक मारेगा। मैं लिनी इस्तेमाल करके चार्ज अटैक मारेगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं इस्तेमाल ही नहीं करेगा बैनेट और शांगलिंग। मर जाएंगे मेरे बैनेट और शांगलिंग इस लिनी से ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि कितने हो गए हैं देखने दो एक सेकंड। 35 हो गए हैं। नाउ आई कैन प्ले नॉर्मल गेम यहाँ पे। कोई ना बताता तो मजा आता। हाँ सरेगी, तुम ये चाहते हो हमारे प्रीमोस वेस्ट हो जाएं। मतलब कभी भला नहीं सोचोगे, मतलब गरीब इंसान का है सरेगी, अपना ही सोचोगे हर बार। मैं तो डायरेक्ट मेन चैलेंज कर रहा है। इवेंट तो 2 मिनट में हो गया था। अगर हमें अश्लील बनाया तो वो आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड को दूसरी बार औखा दिखाती नहीं रे। न्यूजीलैंड एक्चुअली फॉट वेल, मैं बोलूंगा समन तो। दे फॉट वेल एक्चुअली, बट वी टुक द रिवेंज फ्रॉम देम, दैट्स फॉर श्योर। बट दे फॉट रियली वेल इन द वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड अकेली टीम है जिसने हमको बहुत प्रॉब्लम किया है। उसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा किसी टीम ने हमको प्रॉब्लम नहीं दिया है। लेकिन मैं सच्ची बोलूंगा, दे फॉट रियली वेल। मेरे हिसाब से 3rd और 4th विकेट वाले जो थे ना, बहुत सही खेले थे एक टाइम के लिए। वेल्किन वाला गरीब इंसान बहुत बढ़िया। कौन वेल्किन वाला भाई सरेगी? वेल्किन क्या होता है? Eat this. I'm going in. Now disappear. Let's get this show on the road. Stabilize. Kula, get them. Hey, yeah. Everybody stand back. It'll be all right. Step right up. हो गया होगा 50 टाइम्स हो गया, क्योंकि
एक सेकेंड, किसी की चैट मिस हुई हो तो मेरे को बता देना गाइस। वैसे मैंने थोड़ा बोला बेकार का नाइट्रो लेने का। भाई नाइट्रो तुम्हारे लिए लिया है एलिमेंटलेस। अगर नाइट्रो ना ले तो तुम्हारा क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर की क्वालिटी बेकार रहा है डिस्कॉर्ड पे, प्लस तुम्हारी वॉइस क्वालिटी बेकार रहे। तुम्हारे लिए लिया है हमने, अपने लिए थोड़ी लिया है वहां पे डिस्कॉर्ड में। यहाँ पे क्या करना है, फ्रोजन रिएक्शन ट्रिगर करनी है। ओके क्या चॉइसेस दिए हैं इन्होंने हमको, राइजली दिया है हमको। भाई एक मेरे को एक लॉजिक समझाओ कोई यहाँ पे, मेरे को कोई एक लॉजिक ये समझाओ कि मतलब मेरा कैरेक्टर मेरे को दे तो रहा है लेकिन गान्यू को काउंट नहीं कर रहा क्या ये उसमें, कि गान्यू फ्रीज कर सकती है, क्रायो अटैक मार सकती है, क्या लॉजिक है यहाँ पे? मेरे को ये समझना है यहाँ पे, मतलब ये इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है कैरेक्टर सिलेक्शन में? ना यलान है यहाँ पे हाइड्रो के लिए, ना क्या कहते हैं गान्यू है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब क्या उनके साथ उन्होंने क्या गलत किया है? काजुआ डाल दिया इन्होंने, सार्लेट डाल दी है, सिंगशो डाल दिया, लेकिन वो नहीं डाला। ये देखो यहाँ पे ट्रायल में लिटरली लाइक दिया ही नहीं इन्होंने। ऐसा लग रहा है ये कि ट्रायल वाले जो कैरेक्टर है उनमें से अगर कोई अवेलेबल है तो फिर वो हमको उनमें से चॉइसेस देगा, उनमें से उसके अलावा नहीं देगा। वेदर ने भी इंडिया की काफी हेल्प की, मिचेल बहुत थक गया था भाई बहुत। स्टार्टिंग इंडिया के भी क्रैम्प हुए थे, गिल गया क्रैम्प से, तुम्हारा कोहली गया था क्रैम्प से, याद है तेरे को ससे? लेकिन कोहली स्टिल टिका रहा बिकॉज 100 करनी थी उसको, उसके बाद उसने लाइक आउट होने के हिसाब से मारना चालू किया था। बट गिल को लाना चाहिए था केएल राहुल के पहले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गिल का 100 नहीं हुआ क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा क्रैम्प हुए हैं इंडिया में आज तो, इंडियंस को। लाइक स्टार्टिंग में हम लोगों को लाइक थोड़ा सा था कि क्या फाइनल में ये लोग खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। काफी प्रॉब्लम गई है लेकिन क्योंकि सबको। हाँ फुरीना है, फुरीना फुरीना अकेले मार देगी वैसे तो, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइक कि इन्होंने गान्यू नहीं दी है। इतना 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 क्या नफरत है इनको गान्यू नहीं दी है जो। क्या चैट, एक सेकंड। पैसा है बहुत, नाइट्रो वाइट्रो लिया जा रहा है, गरीब हूँ। कौन सा नाइट्रो? नाइट्रो क्या होता है सर? ये स्क्रीन का क्या करना, फोन थोड़ी एलिमेंटलेस तू यूज नहीं करता है ना, तेरा इंटरनेट खराब है, बाकी लोग तो करते हैं यूज डिस्कॉर्ड पे। उनका सोचा कर, खुद का ही सोचेगा हर बार। आया का भी नहीं दिया, हाँ आया का भी नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। इट्स लाइक कि ट्रायल कैरेक्टर में से कुछ अवेलेबल है तुम्हारे पास तो यूज करो, नहीं तो मत यूज करो। तुम जानो फिर, तुम्हारा काम जाने है। Smile! Let me weave you a... Yoo-hoo! कितनी बार हुआ इसमें मेरा? टोटल 14 बार हुआ फ्रोजन रिएक्शन। हो जाएगा ये वाला। एलिमेंटली सुजा भाई करते सीक्रेट में 4K में देखते डिस्कॉर्ड पे, समझ रहे हो? और क्या भाई, don't break the law. मतलब Strike a pose! एलिमेंटलिस को पता नहीं है ना सर कि हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से बोल रहा है। पता होता तो बात अलग होती। मैं ये सब फीचर फ्री में यूज कर लेता। हमको कोई वो नहीं है ना, खुशी नहीं मिलती है वायरस लेके सिस्टम में, इसलिए हम लाइक नहीं करते ये सब चीजें। तुमको पता है मार्केट में एक नया वायरस आया है अभी, मालवेयर आया है, जिसमें तुम्हारा
लाइक तुमको ऐसे दिखाएगा तुम्हारे क्रोम पे कि अपडेट आया है क्रोम का, लेकिन एक्चुअली में वो लाइक तुम्हारा मालवेयर रहता है। भाई मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन अगली गिल की 100 नहीं हुई और उसके सामने सारे 100 मार के गए ऐसे, पता है क्या करता है सब। अभी यहाँ स्ट्रीम पे बताते हैं थेनोस तुम्हारे लिए। मैं आपकी नहीं हूँ ना। नहीं तू है एलिमेंटलेस, तू ही तो अब मेरे को प्लेलिस्ट सजेस्ट करता है। There are What lots of कौन सा माल? journalists in the court of Fontaine, but not all of them hold themselves to a high professional standard. कोई ना, गिल If तो you're फिर ever भी looking to ओडीआई do का an नंबर interview, 1 बैट्समैन I'm your है। best choice. नहीं अब देखना इस बार कोहली बनेगा, सच्ची बता रहा हूँ। आफ्टर ये हो जाए ना वर्ल्ड कप, उसका देखना कोहली आ जाएगा टॉप 1 पे। जिस तरह से कोहली चल रहा है, इवन श्रेयस अय्यर काफी ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं तुम्हारा ये रोहित काफी ऊपर आ जाएगा। लाइक ऑलमोस्ट इंडिया के सारे प्लेयर ऊपर आने वाले हैं। बॉलिंग के मामले में तो समी आएगा टॉप 1 पे, मेरे को ऐसा लगता है। Hold that pose! Rain outlines your fate. Rain, shower me with praise! More, please. हाँ 7 पे तो क्यों नहीं आ पाएगा भाई, आ सकता है वो। जिस तरह के परफॉर्मेंस है वो, गेल से तो बेटर ही परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आ जाएगा वो। समी से ज्यादा विकेट जैम्पल लिया फिर से भाई किसने बोला? अभी टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा विकेट उसके पास ही है, समी के पास ही है। ये आज जो उसने 7 विकेट लिया ना, उसके साथ टॉप पे आ गया है विकेट टेकर्स में समी। किसने बोला तेरे को कि समी लाइक है ही नहीं, समी सेकंड पे है? किसने बोला तेरे को ये चीज? आज के मैच में जब उसका 6वां विकेट हुआ था ना समी का, तभी वो पहुंच गया था टॉप विकेट टेकर में। 7वें के साथ वो एक आगे हो गया। और गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। स्माइल। Let me weave you a verse. Huh? The show begins! Let's begin. It's gonna get a little chilly. कितने हो गए फ्रोजन रिएक्शन मेरे? कंप्लीट हो गया 30 वाला। अरे 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 गई मेरी सारी अल्ट, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। इंडिया 10 मैच खेली है, उसमें समी के 23 हैं, जैम्पा ने 9 खेले, उसमें 22 हैं। अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच होगा, जैम्पा फिर टॉप। कोई गारंटी नहीं है भाई, देख कुछ भी हो सकता है, सही कुछ भी हो सकता है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। Smile! कोई नहीं बता सकता क्योंकि No, my sword. Rain cutter. भाई कितना गंदा डैमेज आ रहा है इसका। Say cheese! Rain outlines your fate. Witness it. Let my name echo in song! Stay cool. Face your guilt. मेरे हिसाब से पता है राइसली उतना ठीक से पता है उसके, पता है फुरीना के स्टैक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। लाइक ये अभी टीम जो इस्तेमाल कर रहा था ना, मैं सार्लेट की हीलिंग इस्तेमाल नहीं की मैंने क्योंकि अल्ट नहीं थी सार्लेट की। लेकिन राइज लाइक जैसे तुम्हारा न्यूब्लेट पता है अकेले पता है कंप्लीट कर देता है ना फुरीना के स्टैक्स, वैसा राइजली नहीं कर पा रहा है कंप्लीट, बिकॉज बहुत कम हीलिंग ले रहा है ये राइजली चार्ज अटैक पे। हेलो कर्मा, वेलकम टू द स्ट्रीम।
यो HSR कब? अभी थोड़ी देर से इवेंट और फोरिना का स्टोरी खत्म कर लूं मैं धीरज, उसके बाद ही। वैसे पुल करोगे? नहीं, सीधा सिल्वर वुल्फ पे पुल होगा धीरज, कोई गारंटी है, मैं नहीं ले रहा रिस्क किसी पे। वैसे हार्दिक पांड्या के साथ भी इंडिया डोमिनेट कर ही रहा था, नहीं लेकिन अभी लाइक चेंज हुआ लाइन अपना। हाँ मेरे को लगता है सूर्य कुमार की जगह अगर पांड्या होता तो ज्यादा अच्छा रहता। बिना पांड्या और सूर्य कुमार को हटा भी देते ना तो वो लाइक मेरे हिसाब से अभी भी टीम उतनी ही इम्पैक्टफुल है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका ससी। कर्मा आप हर किसी को काटते क्यों रहते हो? भाई गुड क्वेश्चन ससी, वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ कर्मा, आंसर करो इनको, क्यों हर किसी को काटते रहते हो आप? क्या मजा आता है आपको हर किसी का काटने में? भाई यहाँ पे हाइपर ब्लूम के लिए लिटरली कैरेक्टर नहीं दिए हैं इन्होंने। दे वांट अस टू यूज बाइजो यहाँ पे, बताओ हाइपर ब्लूम के लिए। इतने बुरे दिन आ गए, बाइजो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। स्काई को रेंज बहुत ज्यादा है, किसी को भी ऑफ फील्ड सेटिंग में ना। आई मीन फील्डिंग में तो ठीक है, फील्डिंग में तो इंडिया ठीक है, अच्छी है। आज थोड़ा ज्यादा हगे हैं, एक्स्ट्रास काफी दिए हैं, ओवरथ्रो काफी गए हैं इंडिया के, पता है देखा जाए तो। Stand with me. The doctor will see you. Ta. Kya. Fa. Ka. Ta. Ta. Fa. Fa. लोग कहते हैं ना कर्मा इस बेच आदत है। वाओ मेंबर पहली चैट नहीं पढ़े तूने, हेलो नहीं बोला वत्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन बोला है वत्स। क्यों पढ़ूं मैं उसमें? तूने बोला हाय मुझे वत्स आके, ये बता पहले मेरे को, बोला हाय तूने? दिल पे लगा तेरा, तूने हाय नहीं बोला मेरे को, नहीं पढ़ेगा मैं चैट तेरी वत्स। नहीं, विकेट में लगने के बाद भी फिर से ओवरथ्रो किया था हमारे कई सारे उन्होंने बॉलर्स ने। जडेजा वाला तो वो समझ में आता है, जडेजा वाला क्योंकि वो बाहर था इसलिए किया था, वो गलत फिक गई थी उससे, लेकिन बाकी बहुत सारे हुए ओवरथ्रो, वाइड भी काफी सारी हुई थी। You are not welcome. Hi! Fallen Amber, help! Mind the side effects. Remember, health comes first. Ta. Ta. Kya. Ta. Ra. You want कितने करने हैं हाइपर लूम इसमें? कंप्लीट हो गया, 30 करने थे, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। पहले जैसे ग्राइंड नहीं हो पाता जेंशिन अब। आई मीन सब कंप्लीट करके बैठोगे तो ग्राइंड करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना, इसलिए तो धीरे धीरे खेलना चाहिए। एंड साइड में अगर तुम्हारे पास टाइम है तो दूसरे गेम भी खेल सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि जेंशिन ही खेलना है। पूरे टाइम जेंशिन खेलोगे तो फिर वो ऐसा लगता ही है कि लाइक कि सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है, कुछ बचा नहीं गेम में करने के लिए। सच्ची बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। Just like we rehearsed. A bitter pill to swallow. Ta. Ta. Ka. Ta. एवरीवन में आप नहीं आते क्या? आज पहले ही नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन ही होगा भाई, पहला नए नेशन आता। ये क्या बात हुई वत्स, मुझे को ये बता पहले, Strike a pose. ये क्या बात हुई? Our bond is strong. I'll settle this. Try this on the side. The doctor will see you. Taking a turn for the better. Kya. Ta. Fa. Ka. Kya. अरे वो उस टाइम का तो हुआ है, उसके अलावा भी हुए हैं 3-4, मैं ये बोल रहा हूँ। Yoo-hoo! Fallen Amber, help!
mind the side effects. Seems like an emergency. This team is working actually pretty well, मैं बोलूँगा। कसम से बोल रहा हूँ, ये टीम पता काफी सही वर्क कर रही है। लेकिन इतने कम एनिमी पे इतना ज्यादा हाइपर ब्लूम और ब्लूम रिएक्शन ना, मतलब बहुत सही वर्क कर रही थी ये टीम। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी वर्क कर रही थी। बहुत कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली, टाइम नहीं मिलता। अच्छा वैसा टाइम नहीं मिल पाता, हाँ तो वो तो है इशू कि टाइम नहीं है तो फिर कर नहीं खेल नहीं पाओगे। टाइम देना होता है क्योंकि, और प्लस वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा क्या कहते हैं पेंडिंग होते जाता तो फिर पेंडिंग के साथ एक्चुअली काफी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज कर पाना। तो मेक सेंस एक्चुअली। क्विकन रिएक्शन ट्रिगर करनी है यहाँ पे। ऑब्वियसली साइनो दिया इन्होंने हमको। कॉके रखेंगे, कॉके। इनका सिंचो का ही रख रहा, मैं अपना सिंचो रखेगा। हट साला। बस पता है। We actually have a chance this time by large amount actually। आज तो लिटरली हर कोई अच्छा खेल गया था इंडिया के बैट्समैन, जैसे वो क्या कहते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले थे ना, वैसे ही था आज का सीन भी मेरे को। लेकिन जो मजा आया है ना श्रेयस अय्यर की बैटिंग में, कसम बता रहा हूँ किसी की बैटिंग में मजा नहीं आया है। स्टार्टिंग में रोहित के में आया था, उसके बाद श्रेयस अय्यर की बैटिंग में मजा आया है। मतलब श्रेयस अय्यर ने अकेले, पता है, न्यूजीलैंड इंडिया के सारे बैट्समैन की मिला के सारे सबसे ज्यादा छक्के उसी ने मारे हैं। सबसे ज्यादा उसी ने मारे हैं। मतलब मिला दोगे ना इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 जो बैटिंग ऑर्डर वाले प्लेयर आए थे, उनके भी मिला के उतने नहीं हो रहे थे छक्के जितने उसने मारे श्रेयस अय्यर ने आज। क्लोज रहेगा। लेट्स होप सो साउथ अफ्रीका जीते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका का ये पता है आई थिंक चौथा पांचवा बार है जिसमें वो लोग सेमीफाइनल्स में आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं। Say no more! No, my sword! To the ferry. Surrender! This. 15 बार ऑलरेडी हो गया। ओके हे भगवान कुछ भी करके फाइनल जितवा दो। क्यों, बस तेरे कॉलेज में छुट्टी पड़ जाएगी क्या अगर इंडिया जीत जाएगी फाइनल्स तो? मेरे को लगता है, पता है, मतलब जितना मतलब हम और ओमकार प्रे नहीं कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बीच में जितना मतलब प्रेशर हमको फील हुआ था ना जब इंडिया लाइक सेकंड 20 या 20-30 के बीच में थी और मिचेल मार्श और विलियमसन जब मार रहे थे, होप नहीं लग रही थी कि विकेट निकलेगा करके, उससे ज्यादा मेरे को लग रहा है प्रेशर तेरे को फील हो रही है। ऐसा लग रहा है तेरे कॉलेज में छुट्टी पड़ने वाली है। हाँ हाँ देखा मैं सही भाई, वो बैट के भी ऐसे उड़ा रहा था छक्के, ऐसा लग रहा था मजाक चल रहा है। मेरा वाईफाई आज बहुत ज्यादा रोने लगा। कोई नहीं, चुप करा दो उसको सन्स। नहीं भाई दिल को अच्छा लगेगा। सेमीज के जस्ट पहले इंडियंस ने पिच चेंज करवाई वैसे, और ये यूज्ड पिच थी, न्यू वाली पिच यूज नहीं करी। पता नहीं है ये इतना डिटेल में नहीं पता हमको शशि, इतना डिटेल में नहीं आइडिया है। Let me weave you a verse. Futile! Judgment is upon us. Grow! Lightning terrified! Stand with me! गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक किया है, लाइक नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितना स्ट्रीम बनाया है। कितने लाइक हो गए स्ट्रीम पे? 17 हो गए हैं। लेट्स गो फॉर 20 लाइक्स गाइस। नहीं 19 हो गए हैं। ऐसा क्या बात?
ट्विटर पे लोग इसको चीटिंग बोल रहे हैं। आईसीसी ने बोला ये कॉमन है, जो होस्ट होता है वो ऐसा करता है सभी जगह। अबे लोग बहुत कुछ बोलते हैं भाई शशि, तूने देखा ही है। बॉल को लेके भी चालू हो जाते हैं। बोलने दे जिसको जो बोलना है ना, बोलने दे। मेरे को ऐसा लगता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को। Ring cutter. Surrender! मेन चीज अभी ये है कि जीतना, नथिंग एल्स मैटर यहाँ पे। ये लीफ कहाँ से गिर रही है? कोई लीफ गिर रही है मेरी यहाँ पे। नॉट श्योर क्या लीफ गिर रही है यहाँ पे। कितना हो गया मेरा? 33 हो गया है, 40 चाहिए है। आई डोंट हैव टू यूज शिंगशो यहाँ पे देन, क्योंकि शिंगशो इस्तेमाल करूंगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। आज जल्दी लाइक हो गए। हाँ कर दिया लोगों ने बिना बोले, मेरे बिना बोले कर दिया लोग, इसलिए अच्छा लग रहा है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो जीतने से मतलब है, चाहे फाइनल हो अपोजिंग टीम के लूज मोशन हो जाए। Make yourselves at home. Futile! Through me, justice is served! Your penance is due! You stay condemned! हो गया ना कंप्लीट? अब बताता तेरे को। रुक Rain साढ़े। outlines your fate. Huh? Huh. Let. Our bond is strong. I'll settle this. Nowhere to run! Judgment is upon you! Guilty! Grow, grow, grow. The Temple of Wisdom. Ring cutter. No, my sword. Stand with me. Out of my way. Futile! एक सेकेंड, 114 बार हो गया है। वहां पे साला दिखा रहा था कि कम हुआ है, 114 हो गया है यहाँ पे। गजब बाबा सीरा भैंस की आंख। मैं तब जब देखा था लास्ट टाइम बेयरली कंप्लीट हुआ था, अब 114 हो गया बिना कुछ करे। आई थिंक 3 डिफरेंट रिएक्शन करनी थी क्या? नहीं, शायद वही करनी थी, क्विकन करनी थी मुझे रिएक्शन में। 2 तो नहीं चाहिए थी आई थिंक यहाँ पे। क्विकन अकेली चाहिए थी। हाँ नहीं, अच्छा तीनों कर सकते रहे क्या? मैं बोला क्विकन बस करना है। यहाँ पे वेपराइज रिएक्शन करनी है तुम्हारी, विच मीन्स ये लोग पायरो देंगे एंड पक्का है मुझे कहीं ऊट पटांग जगह के देंगे कैरेक्टर ये। यप, हाइड्रो इन्होंने दिया ही नहीं है। हाइड्रो में तुम्हारा आयातो है अकेला चॉइस में। बड़े हरामी हैं ये लोग, पता है इनको। पता है लोगों को वेपराइज करना है, तो लिटरली दिया ही नहीं इन्होंने। हाइड्रो लाइक खुद का इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो आयातो दिया, जिसके पास है वो यूज कर ले, जिसके पास नहीं है वो ट्रायल यूज करे। चैट आ रही है क्या? मुझे दिख नहीं रही है। अगर आ रही है तो नहीं आ रही है ना, देन वी आर गुड। लाइक कर देना गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। इस स्टेडियम पे जो पिच सेमीज के लिए प्रिपेयर की थी वो थोड़ी हार्ड है, जबकि इंडियन प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं जब पिच स्लो होती है। तो न्यू पिच में कुछ ईसू बोल के पुरानी वाली यूज की। तभी एक साइड की बाउंड्री काफी लंबी दिख रही थी सर से, आई गेस। One with nature. Nice and spicy. Into the wind. Be still. वेपराइज कितनी बार हो गया? 12 हो गया। बीसी करना है, इजी है ये तो, इजी पीजी है ये। नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे बीसी से आई
के आईसीसी पर प्रेशर बनाने की चेंज करवाई है। अब बोलने दे, जिसको जो बोलना है ना ससी बोलने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। देख सीधी बात यह है, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना तो सामने वाले की जलती है, और ये बेसिक रूल है। Boba! That really hurt! The wind knows me. Be still. अरे ये अभी का थोड़ी है, पहले भी हुआ है कई बार। लाइक हम लोग लाइक ग्रुप मैचेस में भी हुआ है तुम्हारा ये सेम चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ। Nice and spicy! Into the wind. 20 कंप्लीट हो गई है। एग्जैक्टली हाँ, हटा थोड़ी सकते हैं। Frozen. Out of the frying pan, into the fire! Yours! Teamwork is dreamwork. Killjoy! One with nature. Fallen leaves adorn my. Cascade. Are you? Kamisato Abi. Suyu. Everybody stand. कैरेक्टर स्विच नहीं हो रहा है मेरे। The wind knows me. As one with wind and cloud. 30K का मुझे दिखा, पता है यहाँ पे अभी अभी। एक सेकंड, 30K का दिखा मुझे अभी अभी यहाँ पे। क्या कहते हैं, नॉर्मल अटैक है, स्किल जो भी बोलना चाहो। क्या दिया है या तो कोई इन्होंने फ्लूट दी है। ओके, काफी सही डैमेज कर रहा था। बट इट्स बार की अंडरडॉग टीम किसे कहोगे? आई थिंक अफगानिस्तान ही है। एंड उन्होंने लाइक काफी सारी टीम से बेटर खेला है। ससी अफगानिस्तान ही अंडरडॉग है। नीदरलैंड तो न्यू है, तो अभी एक्सपीरियंस ले रही है मेरे हिसाब से, कह सकते हो। तो नीदरलैंड को नहीं कहेंगे, अफगानिस्तान एक्चुअली थी सबसे ज्यादा अंडरडॉग। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी टीम को हराया है एंड परेशान भी किया है, तो मेरे हिसाब से वही है, अफगानिस्तान ही है। बताओ, बैनेट ने 64K का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक मारा है। बताओ भाई, यहाँ क्या करना है? कंप्लीट डिटर्मिनेशन चैलेंज, टोटल 15 अपोनेंट्स। हाँ, दैट्स इट। वेट, दैट्स इट यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। आई एम कंफ्यूज राइट नाउ। जब भी पाक इंडिया से हारता है, यहाँ यही बोलते हैं पैसा खाया है। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के मुंह में हाथ डाल के भी निकाल लिया, वरना हार ही गई थी ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान तो हक दे दिया, ज्यादा ओवर हाइप्ड हो गए। नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए लास्ट में, इसी वजह से हारे हैं। नहीं तो विन गारंटीड थी उनकी, पता अफगानिस्तान की। ओवर कॉन्फिडेंस में हारे हैं। One with nature.
ये फाइनल चैलेंज है आई थिंक हमारा। इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, देखना पड़ेगा मुझे, एक बार वापस चेक करना पड़ेगा कि सारा का सारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं यहाँ पे। Bow your head. Solidify. The wind knows me. जैसे हम लोगों ने आज ड्रॉप किया काफी कैचेस उसके मिचल डैरल डैरल के। नया अभी सुबह 7 बजे आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, रीसेट पे ही आएगा दैट। 2 घंटे इसलिए ही दिखा रहा है कि वो 1:30 रीसेट होता है ना हमारा, तो 1:30 पे ही आएगा। T10 से देखने में मजा आता है क्योंकि यू सी ऑल सिक्सर्स, तो उससे अच्छा गली क्रिकेट ही देख लो, एलिमेंटलेस जो नेट वाला होता है गली क्रिकेट। सस्ता देखना ही है तो वही देख लो, इतना दूर इतनी मेहनत क्यों करनी है? Settle down. Your job. Gather. Into the wind. Shower me with praise. A new job. My lucky day. Ah. यो ड्रैको, वेलकम टू द स्ट्रीम। और ड्रैको खेल लिया HSR? हो गई बात है तुम्हारी ओमकार से? एक ही ड्रॉप किया था विलियमसन, बाकी भाई किसने बोला ससी? तीन या 4 कैच ड्रॉप हुए हमसे। एक तुम्हारा लाइक जडेजा से हुआ है, एक तुम्हारा आई थिंक इससे हुआ है, समी से हुआ था, और एक और कोई सा हुआ था तुम्हारा ड्रॉप। मिस फील्ड भी काफी ज्यादा हुई है हमसे इस बार। Silence. Stabilize. One with nature. Fallen leaves adorn my night. Be sanctified. Bow your head. बेकार लगा HSR का अपडेट? क्या बेकार लगा भाई ये ट्रैक को? टीएल अपग्रेड किया कि नहीं किया इन्होंने? टीएल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया ड्रैको? जडेजा से पिछले मैच में हुआ था ये, दिस वाले में नहीं। थोड़ा हुआ है, इस वाले में हुआ है ससी, पिछले वाले में की बात नहीं कर रहा, इसी मैच की बात कर रहा हूँ। रोहित ने लास्ट में ड्रॉप किया था, उसके अलावा तुम्हारा समी वाला तो मुझे याद ही है, और एक और हुआ था कोई सा ड्रॉप, याद नहीं आ रहा कौन सा वाला था। आई थिंक सारे कंप्लीट हो गए होंगे ना हमारे। डिटर्मिनेशन ये वाला हो गया, 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 ये वाला हो गया। आई थिंक सारे हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। यप पूरे कंप्लीट हो गए हमारे। नहीं बे किसने बोला था मुझे कि इवेंट का लास्ट दिन चल रहा है? इवेंट लिटरली 4 दिन है। ओमकार कहाँ है जी? मेरे को बुलाओ उसको, ओमकार को जरा बुलाओ, मेरे को पूछना है। मैं बोला मेरे को टेंशन देती है, बोला 1 घंटा बाकी है क्या, ये खत्म हो जाएगा आज इवेंट। 4 दिन दिखा रहा है अभी इवेंट को, मैंने अभी नोटिस किया है। मैं तब से सोच रहा हूँ खत्म होने वाला आज इवेंट, में इतना परेशान हो रहा हूँ कि इवेंट खत्म हो रहा है। बुला के लाओ साले इसको, कहाँ गया ओमकार को? साले ने मेरे को टेंशन दे दी थी कि मैंने किया नहीं है इवेंट यहाँ पे। अरे मैंने अभी लिटरली देखा, अभी नोटिस किया, मैं तो देखा ही नहीं, मैं अंधा कर रहा था। मैं बोला पहले खत्म करते हैं भाई, मेरे को पता ही नहीं था। आई एम इन पेन। क्या आई एम इन पेन ड्रैको? जडेजा से नहीं
मैंने एलिमेंटलिस्ट लिटरली मेरे को पता नहीं था कि कितना टाइम बाकी है इवेंट में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 वीक बाकी होगा, लेकिन ये बंदा बोला आज खत्म हो रहा है, आज रीसेट के टाइम लाइक इवेंट जा रहा है ये वाला मिस्ट्री डंजन वाला, कल खुला है और आज खत्म हो रहा है, ऐसा बोला मेरे को। मेरी फट गई, मैं इसलिए कर रहा था, मेरे को अभी देखा जब आराम से खत्म हो गया मेरा। तो चलो अभी फुरीना का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं एंड देन विल स्विच टू एचएसआर। यहाँ पे यही वाला है ना? यही वाला है। ना ना ना, हम पुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल पुल नहीं मारेंगे। अभी हमारे पास हो जाने दो पहले, हम थोड़ा सार्लेट का एक कॉन्सलेशन और चाह रहे हैं मिल जाए, क्योंकि बाद में कब मिलेगा फिर पता नहीं ना, इसलिए। बट इसलिए हम एक रोटेशन और मारेंगे, लेकिन 1610 पुल हो जाने दो, फिर उसके बाद ही मारेंगे। अभी नहीं मारूंगा मैं, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आई थिंक गेम साउंड सही होगा तो डायलॉग की आवाज तुम लोग को आ ही जाएगी। हाँ, गेम साउंड सही लग रहा है। मेरी आवाज भी सही आ रही ना स्ट्रीम पे? नहीं करना सीवन हमको फुरीना, उल्टा 50-50 हार जाए हमारे लिए अच्छा है ड्रैको। हम तो भगवान से प्रे कर रहे हैं अर्ली हार जाए 50-50। मैं अभी इस नहीं कर पाएगा, टाइम खत्म हो गया। तो कल कर लेना ना ड्रैको एलिमेंटलिस्ट, कल कर लेना, टाइम क्या खत्म हो गया? मेरे को लिटरली हार रहा है, मैं जीत गया ना फुरीना पे, मैं सच्ची बता रहा हूँ डिप्रेशन में चले जाएगा कुछ दिन के लिए। बोलूंगा ये क्या कर दिया मैंने। अगर आएगा भी तो मेरे को हारना है, समझ में आया? सार्लेट चाहिए ही चाहिए है, और किसी भी हाल में। हेलो फैंटम, वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ एग्जैक्टली शशि, द मैच वाज टफ एंड लाइक थोड़ा फाइट देखने मिली हमको मैच में, थोड़ा टेंशन देखने मिली, और यू नो वो अलग ही फीलिंग आई मैच में। तो या इट वाज गुड। कल कैसे रीसेट आ जाएगा? क्या रीसेट आ जाएगा? अच्छा नहीं नहीं, अच्छा तू आज अभी से नहीं कर पाया, टाइम खत्म हो गया ये बोल रहा है ना? कोई नहीं, जितना हुआ उतना काफी है एलिमेंटलिस्ट मेरे हिसाब से। अब कल रीसेट आएगा तो रीसेट के टाइम तू पहले अभी इसको प्रायोरिटी से कर लेना, मैं तो बोलूंगा। तू खेल नहीं पाया बीच में, तेरे को ध्यान से कर लेना चाहिए था पहले ही, 1-2 दिन पहले। अभी तो हाँ हाँ C2 जा रहा हूँ राइडन। लास्ट में समी ने जड्डू दिखा दिया लास्ट में समी ने जादू दिखा दिया बोल रहा है। वो तो दिखाना ही था भाई, उसने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, बाद में भी दिखाया जब उसको लाया गया था ट्रस्ट लगा दिखा के। I like निब्बा स्टोरी, I really like it. Let's see फुरीना का स्टोरी खत्म ही होने वाला हमारा स्टोरी। Let's see. After reading through the notebook, some of the lost for words, some weep bitterly, some grind their teeth and howl with rage. A long time passes before the group is able to calmly come together and finally make a decision. She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director Aurelie and her alone. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Hello Vats again. But second inning में बुमराह इतना ज़्यादा swing करा रहा था
भाई बुमराह ने बहुत परेशान किया है न्यूजीलैंड को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। बुमराह और समी ने जो परेशान किया ना न्यूजीलैंड को, वो अलग ही लेवल का था। अबे सब आज ही किया है क्या ड्रैको? अभी रीसेट होने वाला है, डू द क्वेस्ट फास्ट। अभी रीसेट का क्वेस्ट से क्या रिलेशन है जैको? मैं थोड़ी आज अबिस कर रहा हूँ, मैं अबिस कल ही देखूंगा, आज नहीं देखूंगा अबिस क्या आया है। तुम लोग कर लेना अबिस, जिसका भी हो पाएगा रीसेट के टाइम। Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotion into your performance. मैं तो साउथ अफ्रीका के साइड हूँ ससी, बट कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया कई बार हरा चुकी है साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल्स में, एंड फाइनली रिगेन कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने अपना, क्या कहते हैं उसको, यू नो, पेस कह सकते हो, या फिर अपना जो स्ट्रगल चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टिंग में। तो कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पे। And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope, just the most mesmerizing things in this world? I don't believe anybody could be more committed to bringing this story to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss FURINA. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? But then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure a stage. Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. Oh By my which God. I, of course, mean the Opera Epiclese. Whoa, wait, what? No. That's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine? No, though that's not what I meant. हाँ माता आ जाती है, सही बात बोल रहा है। इसको ऐसा लग रहा है easier to defeat है, धीरज को लग रहा है। It is supposed to be your grand finale, right? Don't forget धीरज की ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड टीम जिसने हमको परेशान किया है ग्रुप स्टेज में, समझ में है? साउथ अफ्रीका को हमने लिटरली 62 रन पे आउट आउट कर दिया था, तो इसलिए उल्टा बोल दिया तूने धीरज। Believe in yourself. I have no problem with it then. How about the rest of you? I'll take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on, we'll need to get the go-ahead from Nerilette. I know just where to find him. जूते पे बियर डाल के पीने का कमाल है। और क्या है, ऐसी हरकतें भाई धीरज ही कर सकता है, उसको मजा आता है पता है ये ट्रिक्स इस्तेमाल करने में। क्योंकि लाइफ हैक्स बहुत देखता है ना ये, क्या कहते हैं धीरज, इसीलिए।
यहाँ क्या कर रहा है न्यूब्लेड? Hey, look at that. Looks like I guessed right. You were just guessing? I knew you'd be here. I'm here merely for a short break. It has been a while, Miss FURINA. And you too, Traveler in Paimon. What might I assist you with today? I would like to book the Opera Epiclese for an event. You see... I understand. The process for booking the Opera Epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the Little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Huh? What do you mean? Do I look excited? Yes. And this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and... well, here we are. Why all Archon are broke? Ask the game though. Ask game developers though, Draco. वैसे मेरे को नहीं लगता वेंटी ब्रोक है, बिकॉज वो करता है ना, काम करता है तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता होगा वेंटी, तो वेंटी ब्रोक नहीं है. उसके अलावा सारे आर्कॉन ब्रोक हैं. In the past, we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. No exceptions, nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy, be it on the stage or not. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalet. You are very welcome. Kindest dragon हमारा यहाँ पे न्यूबलेट. Many people were once enthralled by Lady FURINA's performances, myself included. I hope that one day she'll be able to understand that our appreciation was... मुझे ऐसा क्यों लग रहा है न्यूबलेट ने फुरीना के अंदर एक आग जला दी है अभी, लाइक फुरीना लाइक लीडिंग रोल में रहेगी. हेलो ओमकार, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या ये बताओ ओमकार, तुम इंडिया के मैच के साथ क्या फूक रहे थे क्या? ये ऑप्शन मस्त आया है फॉर मेंबर्स. तूने अभी देखा है? यस. तेरे को वैसे पता है महीने में एक ही बार चैट करने मिलता है, ये वाला सुपर चैट टाइप्स है. सो डोंट वेस्ट इट लाइक दैट, यू नो, एवर अगेन अरीना. अभी कर लिया लेकिन बाद में मत करना, ताकि यू नो परफेक्ट मूवमेंट पे तो इस्तेमाल कर सके ये सब चीजें. क्या नहीं, ये बता ओमकार, तू ये बता मुझे, इतना ये समझा, तू इंडिया के मैच के साथ फूंक रहा था क्या, या क्या चल रहा था तेरा? पी के बैठा था क्या? साला मेरे को भी हैरान परेशान कर दिया तूने.
आप वैसे भी पीडी लेते हो। पीडी पीडी मतलब पीडी क्या होता है? यस इवेंट का तूने बोला ना, इवेंट में जब तेरे से पूछा, बोला कि कल खुल गया है पूरा इवेंट और आज खत्म होने वाला है, ऐसा तूने मेरे को बोला था ओमकार, पता है? तभी मैं करने बैठा इवेंट, और जब कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका देख रहा हूँ तो 4 दिन बाकी थे इवेंट में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना टेंशन दे दिया तूने ओमकार। पढ़ लेते हो चैट तो? वैसे नहीं पढ़ तो लेता हूँ यस, बट समटाइम्स किसी किसी मूवमेंट पे तुमको ऐसा रहता है ना कि लाइक कि आज तो मैं लाइक क्या कहते हैं, सुपर चैट टाइप से चैट करूंगा, तो फिर उसमें लाइक उस इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं नहीं, हम फूक के नहीं सुनते, हम बैठे थे, सब कुछ सुन रहे थे। तुमने और ड्रैको दोनों ने बोला है ये चीज, झूठ मत बोलो। पाप पड़ेगा पाप ओमकार तुमको। भगवान माफ नहीं करेगा तुमको इस चीज के लिए। मैं बता रहा हूँ, तुमको इस चीज के लिए ना तुम्हारा इवेंट मिस करवा देगा भगवान, तुमको भुलवा के। एक सेकंड देना गाइज, मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, एग्जिट लैग चालू कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा लैग आ रहा है गेम में, लाइक पिंग लैग है, तो इसलिए वजह से मैं चालू कर रहा हूँ, ताकि यू नो कट सीन लोडिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ये सभी अकाउंट रिव्यू नहीं हो रहा है आज, शायद अकाउंट रिव्यू नहीं करेंगे, हम कल करेंगे अकाउंट रिव्यू, बिकॉज अभी इसके बाद मैं जस्ट एचएसआर में जा रहा हूँ स्विच करके, सो आज नहीं होगा ये अकाउंट रिव्यू। आई एम रियली सॉरी, कल कर दूंगा मैं जब लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कल तो। इसलिए आज लोगों को बोला भी नहीं लाइक टारगेट के लिए, जितने लाइक हो रहे हैं होने दो स्ट्रीम पे, नो प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ी बोला था ड्रैको, मेरी बात चुपचाप चुप चुप के सुनते हो। हाँ रहने दे, क्वेश्चन मैंने ही बोला था ओमकार कि क्या 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 खत्म होने वाला है, तुम लोग बोल रहे हो, फिर तुमने बोला स्पाइरल अबिस और इवेंट दोनों खत्म हो रहा है आज। मैं भड़बड़ा गया मैं इसकी कि कल खुला, आज कैसे खत्म हो सकता है इवेंट, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है ऐसा, एक दो इवेंट के साथ। मेरा छूटा नहीं ऑल दो, बट मुझे पता है ऐसे इवेंट आए हैं, इसी वजह से मैं भड़बड़ा गया था। बाद में देखा तो भाई बचे हैं 4 दिन। नहीं नहीं नहीं, स्पाइरल स्पाइरल रीसेट के बाद स्पाइरल अबिस नहीं कर रहा हूँ, और स्पाइरल अबिस कल ही देखूंगा मैं स्ट्रीम पे, यस मैं सोच रहा हूँ। तो अच्छा है, अच्छा ना कर दिया ना इवेंट, आप कर तो दिया, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना, हम अभी फुरीना का स्टोरी खत्म कर लिए होते और फिर वो चालू कर लिए होते। समझे तुम हमारी बात को? तुम्हें को जल्दबाजी नहीं मचानी पड़ती, ऐसा मान लो। झूठ पे झूठ, घंटा झूठ भाई। ओमकार साले, सूझा के दोनों नंबर मिलकर काट दिए, दोनों ने मिलके काट दिया। क्या है? नहीं एटलीस्ट उनकी वजह से मेरे प्रीमो मिस नहीं हुए, ये एक अच्छी चीज हुई, बट मेरे को टेंशन दे दी थी इन्होंने फ्री फोकट की, कि मेरे प्रीमोस चलेगा इस इवेंट के 480। बस वही एक चीज थी। चलो वी आर गुड गाइस। सुजा भाई, मैं हूता लेती और आपके Good पास news, लाती क्या? everyone. It's done. The opera epiclese is booked. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur Neuvillette was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity, but we now have all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance. A touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. जेंसन गेमर लड़की बन के गया है। Fiamal and I just went over some parts of the script and tweaked a few things.
I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. I never... It's amazing! Even though FURINA's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up! I'm really looking forward to the final production. Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Hey, Loic, get over here. Time to practice the opening number. कट भाई ये वॉलपेपर तो मस्त है पता है. Cursed Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? हबीबी ऐसे ही बोलते हैं. हबीबी बन गया है क्या? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. 6 months हो गए membership के. Finally, and on to the finals, India. Yes, buts. And I can see the electro batch beside you. ओमकार कब रीच करोगे तुम इलेक्ट्रो बैच, ये बताओ पहले. Village Chief played by Bilmart. Leave this place, oh little Oceanid, and never, ever look back! मुनशोर निवलेट कहाँ बैठा है? Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. If only... What should we do? It's almost time for her to take the stage! Why does it have to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? I thought they cure it. So they were only managing your symptoms? I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Miss FURINA, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss FURINA. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets. Myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart, despite all the pain and loneliness she had to endure. She never once stopped believing in the beauty in this world. Well said.
I leave Director O'Reilly in your hands. 6 months मेंबर्स को रेसियन दे रहे हो क्या? वत्स को तो मिली नहीं है, तुम्हारा पता नहीं ओमकार। आ गया गाइस कट सीन। Is she here yet? Will she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Moi, je suis, serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? कुछ समझ में नहीं आया कट सीन में, बस थोड़ा थोड़ा फीलिंग आई। भाई इन्होंने इंग्लिश में क्यों नहीं रखा कट सीन, मुझे ये जानना है। बस बैकग्राउंड में फ्रेंच में कुछ गाना बज रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। बस उसमें लाइक थोड़ा ऐसे लगा कि थोड़ा ट्यूनिंग वगैरह है, गाना वगैरह है, बट कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ कट बैकग्राउंड में। एंड ये फुरीना को विजन कहाँ से हवा से मिल गया है? हवा से फुरीना, हवा में एकदम से फुरीना को विजन मिल गया हाइड्रो का। She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? एंड लाइक फुरीना सरप्राइज फील नहीं कर रही है, उसने विजन ऐसे ही लगा लिया बिना कुछ करे, उसको सरप्राइज फील नहीं हो रहा है। Bro, if they translate that song, then it will be bad. They don't make it mistake again. नहीं रे ड्रैको, ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस सॉन्ग पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना इंग्लिश के हिसाब से, कि वो थोड़ा मैच करे लाइंस। जरूरी थोड़ी एग्जैक्टली वैसी कॉपी पेस्ट करना है, किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि क्या डाला है उन्होंने। Gotta say though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know, maybe it's just a doppelganger.
I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss FURINA. Hey, that's not what we agreed on. Oh, so it was FURINA after all. She's back. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down. Don't be mad. This was a हाँ group पता है ये decision. होता हो रहा है. We just didn't want your contributions to go इतना ही unacknowledged. बुरा नहीं था होता हो रहा है इंग्लिश वाला ड्रैको मेरे को ऐसा लगता है. But they could make little bit improvements, you know. इंग्लिश वाला अगर ट्रांसलेट करके देना है तो. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? At most you might ask to sign a few autographs later. Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. Oh, let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. ताली बजाओ बे मेरे लिए ताली बजाओ यहाँ पे शाओ आया है स्टेज पे ताली बजाओ सालो ताली बजाओ बे. और एक चीज बताओ बे न्यूबलेट कहाँ बैठा है मेरे सिर के ऊपर बैठ के देख रहा है क्या ये परफॉर्मेंस को. स्टेज पूरा चेंज हो गया एक्चुअली. मेरे को अभी रियलाइज हुआ ये पूरा स्टेज चेंज हो गया ओपरा हाउस का बिकॉज ऊपर साइड में कहीं पे वो न्यूबलेट बैठता था एंड ओपरा हाउस का पूरा एक्चुअली वो लुक ही चेंज हो गया है आफ्टर आर कॉन्क्वेस्ट. फुरीना की सीट अभी भी वही है बट आई डोंट सी न्यूबलेट सीट. न्यूबलेट की सीट आई थिंक यहाँ आ गई है पीछे साइड में. डे 15 पास्ट ब्रो. कौन बोल रहा है एक बार इलेक्ट्रा थोड़ा डिस्कॉर्ड जाना इलेक्ट्रा. हाँ देखा मैं इलेक्ट्रा पूरा मैच देखा. किरीमोतो. Did anyone see where Miss FURINA went? Oh. टाटा ड्रैको. I thought Cleo's actress sang very well. Why did they swap her out at the end? I don't know. लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. डिस्कॉर्ड में जाके देख लो तुमको समझ में आ जाएगा. I wasn't expecting such an incredible performance from an amateur troupe. Yeah, their technique could use some polish, but the performance in general felt very believable. Hit all the right emotional notes. न्यूबलेट आया नहीं लेकिन परफॉर्मेंस देखने. दैट इज स्ट्रेंज कि हम पूरे परफॉर्मेंस में कहीं भी न्यूबलेट को दिखाया नहीं पता है कट सीन पे. What a surprise! Seeing Miss FURINA on the stage? This ticket was money well spent. Yeah, I agree. Say what you want about her, but she's flawless when she's on stage. All the people are talking about like FURINA and performer का क्या हुआ करके हैं. Like जिसको भी देखो सभी इसी चीज के बारे में बातें कर रहे हैं.
गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। बाय द वे गाइस मैंने कुछ नोटिस किया है इसके, आई थिंक विजन पे फैंग्स लगे हैं। इज इट बिकॉज कि अभी हाँ फैंग्स लगे हुए हैं नीचे साइड में, तो किसी और फॉन्टिंग कैरेक्टर में है नहीं ये चीज। इज इट बिकॉज न्यूबलेट अभी करेंटली हमारा आर्कॉन है यहाँ पे, या एज अ ड्रैगन लाइक यहाँ पे अथॉरिटी लेके बैठा है हाइड्रो की? इज इट बिकॉज ऑफ दैट? यहाँ पे कौन है यहाँ पे, एक सेकंड को देखने दो। आई थिंक ये अकेली है जिसके विजन पे फैंग है। एंड आई थिंक मैंने एक चीज और नोटिस की थी इसके में, नहीं इसके में तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। सालेट हाँ। Nearer to the action is ऑल्सो मैंने एक चीज और नोटिस की थी, एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि टाइप चेंज होने पे कुछ होता है क्या, तो मेरे को डिफरेंट देखने मिला था। एक सेकंड, इसके हाँ इसके विजन पे नहीं है फैंग, विच मीन्स एनीबडी हु इज गेटिंग आई थिंक विजन्स आफ्टर फुरीना's डिपार्चर फ्रॉम फॉन्टेन एज आर्कॉन, और न्यूबलेट के लाइक पावर में आने के बाद से जो भी विजन पा रहा है, आई थिंक उनके विजन पे फैंग का सिंबल है, क्योंकि सार्लेट का पहले का विजन है उस पे नहीं है, लेकिन फुरीना के विजन पे है। मतलब जिसको भी मिलेगा विजन उसके, अब यहाँ पे उसके सबके विजन पे लाइक फैंग रहेगा। न्यूबे को मिस नहीं कर रहा, मतलब न्यूबे आने वाला था ना देखने परफॉर्मेंस, इसलिए मैं देख रहा कि न्यूबे आया नहीं परफॉर्मेंस देखने। What shall we do? ऐसे तुमने एक चीज नोटिस की है, देखो तुमको जिस चीज के बारे में बता रहा था, देखो अभी फुरीना देखो ब्लैक, अभी देखो फुरीना ब्लैक वाले फॉर्मेट में है ना, अभी देखना इसका विजन देखना, ठीक है? अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पे विजन देखो, यहाँ पे पंखी जो है लाइक ऐसे देखो, लूगिया अगर जिनको पता है पोकेमॉन का, उसके उंगलियां लाइक ऊपर साइड से एक आ रही है और राइट साइड से नीचे की तरफ से ऊपर जा रही है। इफ आई स्विच यहाँ पे फुरीना को वाइट मोड पे, आर्कॉन वाले मोड पे, तो फुरीना का एक्चुअली ये चेंज हो जा रहा है, होता है तुम्हारा विजन का लाइक पलट जाता, लाइक 180 डिग्री पलट जाता है तुम्हारा विजन यहाँ पे, लाइक नीचे से अभी आ रहा है और ऊपर से आ रहा है यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारा विजन पे ये जो है पंखी है। तुमको वो यहाँ विजिबल नहीं दिखेगा प्रोबेबली, इस पे विजुअल नहीं दिखेगा, टाइप जब चेंज करेगी उस पे, उसकी प्रोफाइल पे विजिबल है ये चीज फुरीना की। I don't think that's the case. I think it's because Numa Oshia, that's her vision looks like. No, Draco. Numa Oshia तो वो भी है तुम्हारा, क्या कहते हैं इसका, ये मतलब देख वो दो वर्जन वाला डिफरेंट है, वो उसके विजन पे दिख रहा है प्रोफाइल पे। फैंग आई थिंक इसी वजह से है बिकॉज वो न्यूबलेट के फैंग्स को डिनोट कर रहा है, ड्रैगन के फैंग्स को डिनोट कर रहा है। सिंस अभी ड्रैगन दे रहा है ना विजन, तो उसकी वजह से फैंग्स डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये किसी और के विजन पे नहीं है फैंग। वो भी तो नूमा ओशे इस्तेमाल करते हैं। फुरीना का एक्चुअली जो कैरेक्टर लाइक पर्सनालिटी चेंज होता है ना, उसके वो विजन के लाइक डिस्प्ले पे चेंज है, उस पे नहीं है। उस फैंग उसको डिनोट नहीं कर रहा है नूमा ओशिया को। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो बाकी कैरेक्टर पे भी होता है नूमा ओशिया, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देख अभी अगर इन्होंने आगे फाउंटेन पे लाइक विजन देने का स्टार्ट किया ना, सपोज इन्होंने आगे डिसाइड किया कि हमको फाउंटेन पे विजन देना है लोगों को, ठीक है, और न्यूबलेट के लाइक हमको देते हुए दिखाना है जैसे फुरीना को दिखा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें फिर हमको करेक्टली मालूम चल सकता है कि ये एक्चुअली न्यूबलेट की वजह से हो रहा है या फिर देयर इज अनदर रीजन टू इट, बिकॉज इसका विजन डिफरेंट है। सेम तुम्हारा सेम लॉजिक पता है, सेम लॉजिक तुम्हारा इसके साथ है, पता है काया के साथ है। सिंस काया इजंट फ्रॉम मॉन्स्टर रियली, तो उसका विजन पे एक्चुअली एक पंखी टूटी हुई है। अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे देखो इसके दोनों साइड 3-3 नहीं रहता है अभी। आई थिंक ये वाले कपड़े में डिफरेंट है, लेट मी सी डिफरेंट वाला अवेलेबल है क्या। बेसिक वाले में दिखता है ये चीज, ये देखो इसके दोनों साइड 2-2 हैं, इनके आई थिंक कपड़े में मिस्टेक है। यहाँ पे 3-3 दिखाया है इन्होंने, लेकिन इसके बेसिक वाले आउटफिट पे सिर्फ 2-2 हैं विजन के बाजू में पंख यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे मॉन्स्टर के। और यही तुम अगर मॉन्स्टर के किसी और कैरेक्टर पे जाओगे ना
तो तुमको वो 3 पंखे दिखेंगे वहाँ पे मॉन्स्टर के। तो ये इन्होंने डिफरेंस बताता है। ये देखो यहाँ पे 3 है पंख ही यहाँ पे इसके। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा होगा तुमको आई थिंक, इसके यहाँ पे हाथ के पास, हैमबर के पास। तो वो कैरेक्टर को डिफरेंट दिखाने या फिर डिफरेंट सिचुएशन को डिनोट करने के लिए ऐसा रहता है हर बार। हेलो बैन, वेलकम टू द स्ट्रीम। लेट्स सी, अभी उसकी डेल्फी की लाइक हेल्थ चेक करके आते हैं कि कैसा हालचाल है उसका। कैसे हो बैन, क्या हालचाल है? गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। बाय द वे गाइस, मेरे माइक से और कोई आवाज तो नहीं आ रही ना तुम लोग को मेरे अलावा की? मेरे को बता देना स्ट्रीम पे। Ah, you're back. She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while FURINA was on the stage! You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning! That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. No, don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. Dang, thumbnail इतना देख के अब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है भाई। तो इतना क्यों घूर रहा है थैनोस? मुझे तो ऐसा लग रहा है तूने हिला भी लिया होगा अभी। लग रहा है इसलिए तेरे को अब अट्रैक्टिव नहीं फील हो रहा है थैनोस। डाउनलोड करके तो नहीं रख लिया है थैनोस थंबनेल को? You could capitalize on the rave reviews and license out the little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! ना नवंबर है हाँ थैनोस, वो सब कुछ नहीं होता है। ये तो तुम हमसे बोल दे रहे हो नवंबर है करके, रियलिटी तुमको भी पता है। I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss FURINA's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss FURINA? Any future plans? Well, frankly, I think a return वैसे to FURINA obscurity C3 हो गई, is no longer an congratulations option for थैनोस me. तुमको। I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go, until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right.
No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. There is no need to draw lines in the sand. Yeah. There was once a time when I was an मेरी actress पुरीना in a masquerade. C0 बड़ी मुश्किल से seeking हुई है only थैनोस, to तुम hide the C3 की truth. बात कर रहे हो। मैंने तो जिंदगी में आज तक देखा भी नहीं C3 दिखता कैसे अपने अकाउंट में। मतलब C1 देख लूं किसी कैरेक्टर का अपने अकाउंट में ना तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए थैनोस। हम राइडन का देख लेते बहुत खुशी होती है देख के। C3 तो भूल जाए हम, C3 तो बहुत दूर है हमारे लिए, माइल्स अवे है। But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. Next time I'll invite you to join me. Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. I have to say story was good actually. It was not that bad, but ठीक थी इतना, मतलब there were different perspective यहाँ पे चल रहे थे. I mean, of course I have some regrets, but There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the stories that... I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, thanks to all your help, but most of all, I want... C3 ट्रैवलर भी है ना, C3 ट्रैवलर को कहाँ C3 फुरीना से कंपेयर कर रहे हो थैनोस से? तुम ये बता दो थैनोस, There'll be plenty of तुम हमें ये बता दो सिर्फ कि थैनोस की तुम जब से मतलब फाउंटेन आए हो तब से कितनी बार हाइड्रो ट्रैवलर इस्तेमाल कर चुके हो, ये बताओ मुझे थैनोस. Now that the buzz is worn off, It's ironic to think that in my whole time as a god, and now that the gods have given me their blessing, is... Thank you so much. I feel like it might turn out to be too little, too late for me. अरे But तो still, ट्रैवलर को this has कहाँ been the 5 स्टार कैरेक्टर से experience of a कंपेयर कर रहे हो भाई lifetime. थैनोस? कहाँ तुम 5 स्टार कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो? ये बंदा चला कहाँ गया, मेरे को तो ये जानना है. ट्रैवलर को कहाँ 5 स्टार कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो? 5 स्टार कैरेक्टर अपनी जगह है, ट्रैवलर अपनी जगह है. कहाँ चला गया वो बंदा? C3 तो हमारे 4 स्टार्स भी होंगे, कहाँ उनको कंपेयर करें 5 स्टार से? I wanna visit this graveyard. यहाँ पे कहाँ चला गया बंदा, मैं तो ये सोच रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, नाविया ने उनकी ग्रेव बनाई है, अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना दोनों, उनकी ग्रेव बनाई है यहाँ पे, और फ्लावर भी दिया है. और कुछ चेंज नहीं हुआ है आफ्टर स्टोरी यहाँ पे उस पे, और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे.
एवरीथिंग एल्स लुक सेम यहाँ पे। आई हैव नो आइडिया कहाँ भाग गया वो बंदा। मुझे तो ये भी याद नहीं इसका कैंप कहाँ पे था। मुझे याद नहीं है कैंप कहाँ पे था इसका। यार माइंड कैंप सी है, कैंप ही याद नहीं मुझे यहाँ पे इसका। चलो अभी एचएसआर खेलते हैं थोड़ी देर। एचएसआर में अपडेट आ रखा है, एचएसआर में स्टोरी करते हैं। एंड आई थिंक वीकली बॉस वगैरह उसमें आया है एचएसआर में, मेरे को जितना सुनने में आया है, तो मजा आएगा होंकाई स्टार रेल में। 5 स्टार कैरेक्टर दिखाना किसमें है 5 स्टार कैरेक्टर दिखाना है एलेक्स? किसमें दिखाना तो बोल रहा है? मैंने गेम का साउंड बंद कर रखा है, चालू करना पड़ेगा मुझे। MB का वापस अपडेट आया है गेम में। भैंस की कितना अपडेट देंगे ये लोग एचएसआर वाले? कुछ ज्यादा ही अपडेट्स दे दी गेम में इन्होंने। मेरी आई होप आवाज सही आ रही होगी, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी ओपन द साउंड यहाँ पे गेम में। ओके वी आर गुड। वी आर गुड यहाँ पे। अच्छा हाँ, सिमुलेटेड यूनिवर्स आया है ना अभी नया हमारा गेम में इस वर्जन के साथ। देखें जरा क्या आया है। कोई नया इयॉन आया है क्या यहाँ पे? न्यू क्यों दिखा रहा है? स्ट्रेंज इयॉन तो सारे खोले हैं, न्यू क्यों दिखा रहा था यहाँ पे? वर्ल्ड 8 आया है तुम्हारा। Increase wearer's attack by 12% when wearer speed is equal to or higher than 135 or 160. Wearer deal 12% or 18% more damage based on कि कितना स्पीड ज़्यादा है तुम्हारा, 135 है और 160 है। सपोर्ट वाला नहीं, सपोर्ट नहीं है, DPS का है लिए है। Increase wearer's energy regeneration rate by 5%, increasing damage by 10% for all allies that are the same type as wearer. Okay. सिम्युलेटेड यूनिवर्स आया है। और क्या है अपडेट में? ट्रेल ब्लेजर मिशन आया है, लाइट कोन रिवॉर्ड वगैरह है यहाँ पे, 2 केसेस हैं, गिफ्ट ऑफ ओडिसी है। ओके ये तो पहले रीसेट हो रखा था। स्वॉर्म डिजास्टर इज सेम, आई गेस यही आया है। तुम्हारा नया ले लाइन आया होगा और है ना गेम में, कैवन ऑफ कोरोजन नया आया होगा। वो आई थिंक अभी डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज हमारा स्टोरी नहीं की है, तो एरिया अनलॉक नहीं है सैडली।
पिंग फ्लक्चुएट कर रही है एचएसआर में काफी ज्यादा। आओ करें स्टोरी करते हैं एचएसआर में। Arum City, and here is the quest, I guess. Yo, it's you! You're interested in the supernatural, right? Lucky for you, I just finished editing my stream. It's all the proof you need. But before you watch it, I gotta ask you a question. Do you believe in ghosts? Weeds and it didn't happen and no clickbait. I think you're in for a surprise. This video is gonna prove that the Xianzhou is full of supernatural phenomena. Enough chit-chat. Look, this is the weird stuff that happened yesterday when I was streaming in Fixtral Garden. What's up, guys? Little Gui here. We've come to the scariest, most haunted place in the Luofu, Fixtral Garden. Don't forget to like, follow, and share, or else I'm gonna chicken out. They say there's been paranormal activity. You're such a scaredy cat. You said you'd protect me. How do I Shujha क्या कर रही है यहाँ पे? I think I just saw something moving. And a group of flames suddenly grew super big! And then they floated right out to us and they were like, ah! And Sushong was like, eek! And then she fell over! Miss Sushong, can you get up? Aren't you getting cold? Ugh. Me and my bestie got kicked out of the garden straight after. But did you see the key moment? Wait, what the heck was that cutscene? Mine Gene DPS build किया है. Level 60 है, crit 88 145 है. 88 नहीं चाहिए crit rate तुमको. To be honest man, 88 की जरूरत नहीं है. 60 is good enough. You can go more CD उसमें. क्योंकि CD का में तो फिर DPS नहीं है तुम्हारी जीन. और ER ढंग से रखना, क्योंकि ER नहीं रहेगा तो तुम डैमेज कैसे करोगे एनिमी को. Ghost were cheap special effects. Ugh! Why are you so focused on all the wrong things? It wasn't the Realm Keeping Commission or the Cloud Knights that came to deal with it. It was the judges from the Ten Lords Commission. Judges from Ten Lords Commission? That's crazy. That's what I'm saying! At first, Sushong didn't believe that Fixtral Garden was haunted. But after the judges showed up... My Chichi is now doing some good damage now at C5 finally today. नहीं मुझे पता है चीची का क्या कहते हैं वो पोटेंशियल करेगी वो तो. In other words, something big must have happened in Fixtral Garden for them to show up. They went to Fixtral Garden to catch ghost. Exactly. Now, do you believe that my content isn't clickbait? Actually, do you have some free time? Do you want to explore Fixtral Garden together? Just the two of us? I guarantee you we're gonna reveal the truth this time. Let's face the ghost together. High risk, high reward, high view count. As we grow up, our curiosity for the unknown gradually fades. I'm not gonna let myself become a boring grown-up. और थोमा C4 है. थोमा doesn't matter to be honest, man. थोमा होने ना होने से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, man. हुआ and tail was so funny. वो देखा तूने क्या कहते हैं? गेम प्ले ट्रेलर और इन्होंने हुआ का वो डाला है. स्टोरी टाइप से डाली है. देखा तूने धीरज? बहुत सही बनाई इन्होंने वो. इग्नोर बैन थोमा को. Why are the ghosts haunting the garden? A lingering grudge, perhaps? Or maybe they're an omen of some impending disaster. Sure. Don't be scared. When the time comes, just hide behind me. It's also crazy. वेट, ये तुम्हारा रैल्म कीपिंग कमीशन है ना यहाँ पे?
आई थिंक ये हाँ रेल्म कीपिंग का मिशन वाला एरिया है ये तुम्हारा, वहीं से रास्ता है तुम्हारी। लैला कर सकता है अगर तेरे को सील्डर रिक्वायर्ड है वैन, तो लैला अच्छी है सील्डर में। लैला तेरे को कर सकता बिल्ड अगर तेरे पास सील्डर नहीं है तो। ऐसा सच मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को। I don't believe in Extractor ghosts. cleaned or your star skiff serviced? Look no further. कर सकता है सील्डर अगर चाहिए, सील्डर है तो फिर मत कर। It's so dark in here. It feels like we're being watched. Did anyone ever tell you the scary stories about Fixtral Garden? Could you make it quick? Sure. I guess now is not really a good time for stories. Don't worry. I can sum it up in a single sentence. हाँ कर सकता है वैन। Fixtral Garden used to be a garden delve, but people started coming here to mourn fallen Foxian fighters at the Foxen tomb, and rumors spread that the garden was haunted. I know it's easy to cast doubt, but the Ten Lords Commission actually showed up this time. Speaking of which, we have to avoid running into the judges. If we get kicked out, it'll all be for nothing. Anyway, that's the background. Let's keep moving. And watch your step. Bring it on Smux। हाँ ये क्या है? It seems like हमको ऊपर जाना है वहां कहीं पे। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है यहाँ पे? ओ भाई ये तो बहुत बड़ा एरिया है। Wait. There are 10 Lords Commission Spiritfarers on patrol. Let's go the other way. लैला का सील ड्यूरेशन 15 सेकंड का है लेकिन वो एक्चुअली अगर तुम उसमें ढंग से एचपी नहीं दोगे ना तो वो टूट जाती है जल्दी। सो देख के बिल्ड करना थोड़ा लैला को, मैं बोलूँगा बस, और कुछ नहीं बोलूँगा। हार्ड हो सकता है तेरे लिए बिल्ड करना थोड़ा सा। This could serve you well. Whoa! This place feels pure evil. ये कौन है बे उस Time to साइड में? get some footage. यहाँ पे कुछ तो है। वो कौन है बे? वो क्या कहते हैं, इतना बड़ा एक्स लेके खड़ा है जो, ये कौन है इधर पे सामने? ये कौन है? मारा स्ट्रक बार्डन इसका नाम है। 10 Lord Commission soldier that has fallen into Umara. As long as they are still mortal of flesh and blood, the people of Senjo will never able to escape their fate. Okay. Umara struck enemies हैं। I wonder if this thumbnail would be approved. आई थिंक यहाँ पे मिशन होगा, पता है, पेपर काइट वगैरह और जो स्टीली वगैरह है यहाँ पे जो हमको दिख रहा है। आई थिंक ये मिशन होगा, कुछ अचीवमेंट Follow होगा। me. Keep quiet and tread lightly. वो इशू नहीं Hey, है। hey, it looks like there's someone up ahead. Let's go around. इन पे आइज वीकनेस है ये 10 लॉर्ड्स कमीशन फाइटर के ऊपर। आइस एंड विंड है वीकनेस यहाँ पे। बेसिक वीकनेस है ही नहीं।
Elite enemies was actually pain. Really? देखते हैं. No idea मेरे को. We'll see क्या होता है. मैं अभी तो कुछ नहीं देखा. सामने एक दिखा रहा है मुझे. ये कौन है? रेथ वार्डन है. अरुमटॉन स्पेक्ट्रल एनवॉय है सामने. वेट, ये फीमेल वर्जन है तुम्हारे वो अरुमटॉन का. लुक एट हिम. इनके ऊपर वीकनेस नहीं है एक्चुअली. आइस वीकनेस दी है इन्होंने. दैट्स द प्रॉब्लम यहाँ पे. पता है, आइस वीकनेस फिजिकल वीकनेस है जो है ही नहीं हमारे पास. वो यूज कर सकता हूँ मैं. ऑल तो क्या कहते हैं, हमारा लाइक डीओटी टीम इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से. बट ये देखो बे, फीमेल वर्जन उसका अरुमटॉन का. इन सिमुलेटेड इमर्सन एमओ से बहुत मारेगा. 36 to 40k के आसपास अगर बैन तो कर सकता है एचपी तो ज्यादा अच्छा रहेगा लैला की. Let's fight this guy. I have no idea. No matter. Bad luck. ये You're क्या in था? trouble now. ये क्या किया इसने? Miss Fortune. Reduce damage taken by 16%. Reverberation. After receiving an attack, enter strong reverberation, then dispels reverberation. What is reverberation? Awaken dormant scales. World cleansing dragon. भाई you have a weakness. Ice weakness है enemy पे. मेरे पास घंटा नहीं है. And awaken. Need a doctor? Threat raised. I sense a storm. Heaven surge. Break. भाई टैंकी हैं ये लोग. बहुत टैंकी हैं. Friends. Oh, grace. 1,000 wonders to fight as one. Suppress. Caught in the web. Can we talk? अच्छा खासा डैमेज दे रहा है पता है ये लोग. The times are changed. Heaven surge. Rise. Awaken dormant. World cleansing dragon. इजी था ये. बट स्टिल इन पे नहीं है वीकनेस. देखो इन पे नहीं है मेरी वीकनेस. ये देखो इन पे आइस दिखा रहा है मेरे को वीकनेस यहाँ पे. सो इन पे नहीं है वीकनेस मेरे पास. दैट्स द इशू यहाँ पे. A little something for everyone. Infallible. No matter. Oh, grace. All things human creations. Let me tend your wounds. Heaven surge. किसने बोला ऐसा? ये भाई डैमेज अच्छा दे रहा है. Welcome, customers. Heaven surge. Rise. Whoa, I didn't know you were so strong, bro. But these are Lawfu officials. If we're interrogated, we need to get our story straight. Sneaking around, are we? इधर उधर साइड नहीं जाना है बिकॉज उस साइड वो एनिमी घूम रहा है पता है. आई थिंक मैं हील नहीं हुआ पता है. जिस काम के लिए मैं उनको मार रहा था हील ही नहीं हुआ मैं.
A little something for everyone. Infallible. Let's be friends. Awaken, dormant scale. World-cleansing dragon. We came together. Need a doctor? I sent a storm to heaven's surge. Break! ये लोग The तो easy consequences हैं। are mine to bear. एक सेकंड थोड़ा कम कर लेता हूँ। आई थिंक थोड़ा बैटल म्यूजिक ज़्यादा लग रहा है मुझे, पता नहीं, यहाँ पे साउंड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, बट कम कर दूंगा तो फिर वो भी कम हो जाएगा, तुम्हारा जो यू नो एनवायरनमेंट साउंड आ रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। सो मैं कम नहीं करना चाह रहा था बट अब करना ही पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आवाज़ तुम लोग को अनोइंग फील हो रहा होगा। ये कौन है बे? अच्छा ये लेडी आरामोटान है तुम्हारी, ये तुम्हारी लेडी आरामोटान है यहाँ पे, स्टैग्नेंट ऑफ शैडो है ये। Converge and awaken. Yin and yang. Heaven's surge. Rise! Awaken, dormant scales. World-cleansing dragon. ये वाले इजी हैं, वो भी अरुमाटॉन जो गर्ल टाइप की आई थी वो भी इजी था क्योंकि वीकनेस था उस पे, पता है। आई वंडर तू किस एनिमी की बात कर रहा है, कौन है एलीट एनिमी यहाँ पे जो बहुत गंदा मार रहा है। डैमेज अच्छा दे रहे हैं बट ये लोग, वो तो मानना पड़ेगा, डैमेज अच्छा दे रहे हैं ये लोग। Halt! What's up, guys? State your name and your business. Arrest them immediately. Suspicious individuals in a restricted area are detained first and interrogated later. No exceptions. Restricted area? Since when were you in charge of Fixtural Garden? Welcome, customers. Together as one. The strength. Heaven's surge. Break! Let's be friends. Awaken, dormant. World-cleansing dragon. Suppress all things human creations. What's in your prescription? Reciprocity. Oh, Grace. Wheel of Karma. By the 10 lords. A quick divination. मैं ये सोच रहा हूँ ये कर क्या रही है। इन एक सेकंड, मेरे पास लाइक सीसी रेजिस्टेंस है, नहीं है क्या? नहीं, एक बार में उड़ा दी मेरी सीसी रेजिस्टेंस धीरज फुजुआन का, लाइक लिटरली सीसी रेजिस्टेंस जो था उस पूरा एक बार में इसने हटा दिया, और इसको पता नहीं क्या कर दिया इसने। स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इज अनेबल टू टेक एक्शन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टर्न, से एक टर्न के लिए लॉक कर दिया है, लॉक भी बैठा दिया है। Heaven's surge. Rise! Oh, Grace. At ease, Wraith Warden. These two are not your enemies. Understood, Your Honor. Look how pale she is. And it seems like her eyes aren't even focusing. Is she a ghost? As a member of the Ten Lords Commission, you may as well consider me a member of the dead. I am a judge, alias Hanya,
responsible for the 4 duties of detention, incarceration, interrogation, and punishment. Therefore, I know a thing or two about you. एक सेकंड, वो तो ऐसे ही साइड कैरेक्टर हैं. डू द डोमेन आर्टिफैक्ट आल्सो हुए. इट्स एजुकेशन फोकस्ड. करते हैं ना, करते हैं. The lady elite enemy when they use their full power in domain are annoying. They apply so many debuff. So your Tingyun Boba. भाई उसने मेरी सीसी ऐसे ही हटा दी भाई. मजाक बना दिए सीसी लगाना दूसरे के ऊपर भाई. मैं तो वो सोच रहा हूँ जिनके पास फूजुआन नहीं है, सीसी रिमूवल कैरेक्टर नहीं है, वो कैसे काम चला रहे होंगे अभी अपडेट के बाद. Gwenifan, an outworlder unemployed. You entered Fixtral Garden with Sushang, a cloud knight, the day before yesterday. Unemployed? I'm a street performer and a streamer who reports on current events. A streamer. It's a legit operation. As for this one here... Your Honor, it was Gunaifan's idea. You are a passenger on the Astral Express and a guest of the seat of Divine Foresight. You assisted the Cloud Knights in resolving the Ambrosial Arbor calamity and are a friend of the Alliance. He's the Nameless? From the train? Tell me, Gwenifan, why did you return here? No reason. I haven't posted anything for ages, so I wanted to film some ghosts for my videos. पता है ये जो जूई है ना धीरज, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं अनएम्प्लॉय बोल दिया सीधा स्ट्रीमर को भाई. बुरा लगा भाई दिल से धीरज. और मैं ये बोल रहा हूँ ये जो जूई है ये एक्चुअली पता है वो है रोबोट है. लाइक रोबोट नहीं होती तो कितनी सही दिखने में है, लेकिन सी इज अ रोबोट अनफॉर्चुनेटली. We have already told you there are no ghosts on the Xianzhou. It is a ridiculous superstition. As a resident of the Xianzhou, you should refrain from believing or spreading rumors. But I saw them! They had ghostly flames coming out of their body, and they were cackling. And Sushang saw them too! Miss Gwenifan, it's hard to explain, but those things aren't ghosts. Please don't bring legends from your homeworld onto the Xianzhou. The roaming entities you saw are extremely dangerous energy parasites. We call them heliobi. Really? I don't believe it. Heliobi? What's that? Oh, I get it. Heliobi is just another word for ghost on the Xianzhou, right? That's gotta be it. Maybe we should let Mr. Tail out for a bit. Mr. Tail. I heard you. Unbelievable. What am I, her pet? डॉक्टर रेसियो का मैं हाँ मैं आज गेम प्ले देख रहा था उसका डॉक्टर रेसियो का भैंस किया पूरा मैथमेटिक्स उठा के और मैथमेटिक्स की बुट उठा के पता है एनिमी को मारता है वो भी पत्थर उठा के पता है मैथमेटिक्स भी नहीं एंशिएंट जो मैथमेटिक्स के से बने हुए पिलर रहते हैं ना उठा के एनिमी को मारता है पूरा L प्लस रेशियो डाल बना के लाइक पाइथागोरस लगा के लाइक पूरा का पूरा लाइक पिलर गिरा देता है डॉक्टर रेशियो मतलब क्या ही है पूरा मैथमेटिक्स उठा के मारता है डॉक्टर रेशियो रुएन मा ये एक्चुअली काफी सही लगी मुझे एनिमेशन वाइज Mr. Tail? I'm a heliobus. We're not ghosts. Got it? Now scram! What a strange girl. Here to film ghosts, yet terrified when she lays eyes on one. Deep breaths, little Gray. Deep breaths.
have a small chat with this Mr. Tail? I said scram! I have no time to talk nonsense with you. Let's go. He doesn't want to talk to us. What a I rude told you, I'm not a ghost. If I have to repeat myself again, I'll be eating every one of you. Please don't be afraid. He's only kidding. Mr. Tail is a vegetarian. Your Honor, if I may ask, what exactly is this fire thing? How can we prevent it from hurting people? And why is a judge carrying one around with her? हाँ ये फुल कार्टून है भाई तुम्हारा मिस्टर टेल भाई उसकी पता है वॉइस लाइन अच्छी है मिस्टर टेल की और हुआ की भी वॉइस लाइन काफी अच्छी है I believe we're done here. We have important matters to attend to. Hua, please see them off. Yes, ma'am. Sister, don't be angry. Most of your time is spent in the field. You're not accustomed to dealing with others. Leave this to me. If I explain the reasoning, they will leave. As things stand, the situation in Fixed Stroll Garden is sure to keep drawing attention. If we forcibly dismiss these two today, their curiosity will remain. वॉइस लाइंस या Who वॉइस knows दोनों what कह might सकता है happen दोनों if they अच्छी decide to हैं come back. They might not be lucky enough to run into us next time. As I said, sister, I will handle this. I assume the two of you heard about the damage done to the Artisanship Commission's creation furnace? The heliobi sealed within escaped, and have been haunting this place. The Ten Lords Commission has orders to capture them. I am strongly advising you to leave, for your own safety. If you have any questions, raise them now. I will do my best to satisfy your curiosity. But I hope you will keep any information you hear in strict confidence, and then leave Fixed-Stroll Garden, never to return. That's very reasonable, Your Honor. Thank you. I promise we'll leave after asking our questions. As a clerk at the Hall of Karma, my knowledge on these matters is somewhat limited, but I will try my best to satisfy your curiosity. Please proceed. What exactly are heliobi? According to the Divination Commission's classification, they are energy parasites from the cosmos itself. They are starfire essence that materialize in the form of strange fire. Metaphorically speaking, they are like moths to a flame, but that flame is the thoughts of sentient beings. Are heliobi dangerous? Yes. They attach themselves to sentient beings, feeding off their host's experiences and emotion. A heliobus will slowly take root in its host's nervous system, using their deepest desires and weaknesses to create wild delusions. They manipulate their host like a chess piece. The host has no choice but to obey the heliobus, so we refer to it as possession. By that point, the host is no longer who they once were, but a heliobus both similar to and completely different from their past self. So tail is dangerous. Dangerous? Oh, you don't know the half of it. The other heliobi are nothing compared to me. Tail was subdued and sealed in my tail by Madame Hanya. He won't harm others. Regrettably, heliobi are not flesh and blood, and so they are difficult to destroy. Before the restoration of the creation furnace, the Ten Lords Commission plans to set up an evil binding matrix in this abandoned garden to imprison these abominations. I don't have any other questions. As you can see, the evil binding matrix has not yet been completed, and not all the escaped heliobi have been recovered. This area is still very dangerous. I will ask Judge Huohua to escort you out of the garden. Not all the escaped heliobi have been recovered. So that means the other supernatural stuff that's been happening on the Law Fu might be related? Your Honor, I have loads of info sources. Maybe I can help you. Unnecessary. Those not involved should leave now. Excuse me. We should go. वेट हम लोग इसी साइड से आए थे और हमको इस साइड से बाहर निकाला जा रहा है. What the heck?
Fixtral Garden is full of abnormalities. This place is dangerous. Ghosts? Heliobi? Possession? That was a big info. Ugh. It all sounds more like an urban myth than a ghost story. Energy parasite sounds more cool than scary, don't you think? Myths are born out of ignorance. Yeah, I guess so. I still feel like my audience will see them as ghosts. Ugh, I've got loads more questions, but my curiosity is satisfied for now. We better leave before the judges decide to. I'm gonna see if I can get a video of Mr. Tail on the way back. I've already got the title. Demonic fire suddenly appears in Fixtral Garden. Innocent Foxian girl possessed. Can you give me a hint? You will be handed a few centuries of jail time if you are irritated with this. True. Let's go. Excuse me, can we go now? Is Tail coming too? Yes, he's trapped in my tail, so... Trapped? For now? Sooner or later I'll find a way to make you break the seal. You think I like spending time with you? Shall we go? Yes, please lead the way. Let's go. Let's go this way. It's quicker. Miss Hua Hua, can we have Mr. Tail come out for a photo? Miss Queen, I'm on official duty right now. It's so quiet. It's getting scarier and scarier. भाई इन्होंने बनाई तो बढ़िया जगह है. Close to me. Hello Sanu, welcome to the stream. बनाई इन्होंने मस्त जगह है वे गेम में. ये देखो डिजाइन मस्त किया है इन्होंने. कुछ भी बोलो. Did you hear that? What was that sound? It's a ghost! What's happening? Is it the same kind of thing as Mr. Tail? Is it another heliobus? It's nothing, you skip. Wait a minute. Where... Did we lose her? वाह भाई भाग गई वो. Oh no. You? Is it me? Or is this place starting to feel weirder and weirder? Oh, I'm scared. Can you stay close to me? I don't want to lose... यहीं कहीं पे है तुम्हारी गुनाइफन. हाँ इधर कहीं पे है. Gunaifan. Welcome to the stream, Where are Sano. you? Whoa, stay close. But, Whoa? Oh no, where did she go? देखो इस गेम में गाइस हमारे ट्रैवलर को भी वॉइस मिलती है कट सीन पे. यहाँ तो वहाँ पे देते भी नहीं है हम लोग को जेंशिन में. कितनी गरीबी है. Is this a mirror? It looks a little creepy. Hi. What the heck? ये अभी क्या हुआ? हम मिरर के अंदर आ गए. मिरर वर्ल्ड में पहुंच गए. Where am I? Is this Fixtral Garden? I should keep moving. What the heck? हम कहाँ पे पहुंच गए? इल्यूजनरी मेज करके कुछ है जगह का नाम. Find an exit. Seems like ये तो इधर ही कनेक्टेड है वापस. Yep.
ये वापस वहीं कनेक्ट हो गई है। Wasn't I just here a moment ago? मेरे को लगता है स्ट्रेट जाना है सीधा। I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Okay. Wasn't I just here a moment ago? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. What the heck was going on यहाँ पे? मैं क्या चल रहा है ये तब से? Isn't this where I started? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Only certain doors are opening यहाँ पे. Wasn't I just here a moment ago? I need to look closely around this place again. I think this is the exit. Maybe I can break out of the cycle. I think so. नहीं, this is not the exit यहाँ पे. ये क्या चल रहा है? Isn't this where I started? And वापस से सारे गेट खुल गए हैं. I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Am I supposed to go just straight यहाँ पे? लेकिन फिर ये गेट ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेट आने पे. Wasn't I just here a moment ago? You've noticed it, no? All roads are but puzzles in this place. क्या है बे इसकी यहाँ की जगह है? You have a strange scent on you. You must be. I have heard the whispers of the leaves that fall in Fixtrel Garden. The flames weep and profess to me that a powerful mortal approaches. They carry the scent of a great battle. With none other than Fentilia. You are the one who drove Fentilia away. What power! Your presence alone is delicious enough to make one tremble. Let me taste you, please. One bite, just one bite. I can't wait to savor you. What the heck? These are no ordinary ingenia. Of course not. They are mere pawns dancing to my whim. Let's make it quick. Push them. Smash them to pieces. What a peppery fighting spirit! Such an addictive flavor! Let me see. The one who defeated Fentilia. I wonder what they taste like. हमको possess कर ली उसने. You fought well. You're fighting for your survival after all. I'll take that as my invitation to inhabit you for a while. Fine, just stay put. Don't cause trouble. Oh, my delicious host. You taste so special. Different from anyone else I've ever possessed. But what is this at your core? Sun? It burns. You can call me Cirrus. Ask for what I want. Rest assured, I only want to leave this place. I have no desire to harm you. Allow me to explain what's happening. The Xianzhou natives call it a ghost lock. You're walking in a circle, and no amount of walking will get you out of it. So, I'm going to help you break free of the circle that FURINA created. And you're going to help me evade the judges of the Ten Lords Commission. It's a win-win. How does that sound? ये मेरे को भाई possess करना चाहती है. You must have figured out that I'm not the master of this place. It was created by another heliobus named FURINA. Unfortunately, I'm the only one who can help you escape from here.
You already found clue that can get me out of here. You mean the talismans left behind by little lost fox judge? Those won't help you. Now that I'm possessing you, I can make you see things that you couldn't see before. I refuse to work with you. What a stubborn fool. You won't ever get out of here without my help. Anyway, I'm not here to ask your opinion. As a courtesy, I shall leave you intact, for the time being. As soon as I get what I want, I'll be gone. Now, go and look at those talismans again. The paper dolls. You'll know where to go. Paper dolls? Go. Find all those clues your judge friend left behind. Find the talismans. You can trust me. I want to leave this place too. We are useful to each other. Oh, अच्छा ये In any वाला. case, it doesn't matter if you don't trust me. It's not like you can be rid of me. Hey, use your eyes. I made the talismans float. Pay attention. Do you understand? This... यहाँ पे क्या लिखा है? Vermilion bases. If you refused my offer, leave the cerulean vases pristine, unharmed. At the same time, with the vermilion vases, you should break them all if you accept my offer. Story of the supernatural is in the illusory maze for a reason. It contains the clue to help us get out of here. Come back and read it again if you need to. ये है क्या यहाँ पे bases? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. अरे यार रेड वालों को तोड़ना था. मैंने गलती से वो ब्लू वाले तोड़ दिए. I guess. नहीं जा सकते क्या? The door will not open without the proper courtesies. तोड़ तो दिया मैंने. अभी क्या करना है? The courtesy. It seems like we're ready. Now we just have to get out. See? I told you I'd help you. The way out is straight ahead. Stop. Do you remember our deal? You need to help me evade capture. There is a judge up ahead. What? Are you scared? That judge? I can taste her fear from miles away. That coward has no right calling herself a judge. But that thing attached to her is the tricky part. Forget about the judge. Just... It's you! I finally found another living soul! I'm so happy! I thought I was gonna be stuck here forever. Have you seen Miss Gwayniphen? I still haven't found her. She probably trapped somewhere around here. Give it up. Gwen. How can that be? If that could happen to someone as lively as Miss Gwayniphen... Why don't you... You can find the way out, right? Oh, not this again. You're a... You know I'm not cut out to be a judge. I thought maybe if I worked long enough in the 10 Lords Commission, I'd get braver. But now... useless brat. You talk tough all day long, then let both of us get stuck in a trap. Who's the useless brat now? Help, I get possessed There's by no Heliobus. point in following me. I'm leaving, and you're... Beast? From a taxonomic perspective... The 10 Lords Commission needs to overhaul their hiring criteria. How did... Hey, cut it out! I'm the only one around here who gets to tell this kid off. Me and those other judges. Wait. Hold on.
I smell something familiar. Cirrus, it's you. Still a fan of your pathetic ventriloquist act, I see. Oh, this is funny. This is just too funny. I thought you'd already escaped the furnace's destiny of torture. Who would have thought that a piece of Ignomar the Great, the fragment with the most fight in it, would become a guard dog sealed inside a crybaby? Oh, forgive me. Did I say guard dog? No, that won't do. You're just a guard dog's tail, right? Laugh while you can, coward! I'm gonna swallow you whole the second you leave that boy's body! Terrifying. You couldn't leave that judge's body if you tried. You can't eat her, let alone escape from her. Darn it! Think of something, you wimp! Mr. Trailblazer, take this talisman and stick it to your... Hey, boy! Say something nice to Wawa! Chat with Cyrus and chat with Tail. Cirrus talks nothing but nonsense. Yes, which is why she needs other organic beings like you to you think I'd be... Oh, what a feast! Human emotions are simply... Does it amuse you to make a little girl cry? Does this, Sienge? For a Heliobus and enjoys provoking your weak human sentiments, I can now. Don't forget about our deal. Of course. Keep at it. What are you? I'm sorry, Hua, are you okay? It's not your fault. It was that bad Heliobus making us fight. Someone as nice as you wouldn't say such mean things. Only a possession would make you act like that. Still, I've always been shy and scared. My life's been a nightmare ever since Tail possessed me. When I was at school, people were always asking why my tail was on fire. Everywhere I went, people would notice. Oh, so it's all my fault. If you just let me devour you at the start, I could have spared you. Then I got into the 10 Lords Commission. Everyone there is weird, so I thought I found somewhere I belonged. But the job is too dangerous. I have to fight demons and ghosts and bad guys. I'm just not cut out for it. If I make it back alive, who thought making a heliophobe with a heliobus in her tail hunt heliobi was a good idea? You're doing very well already, Hua. You hear that? Stop crying. You're useful. And your paper dolls are useful too. Oh, I've had enough of this. As soon as I swallow that coward Cirrus, I'm gonna devour this little crybaby too. What a pity that Mr. Tail is nothing like he used to be. If we still had our old power, we could forget about this maze and devour its creator, FURINA. Your old power? Well, Mr. Tail, seems she knows nothing about your past. Little Missy, do you know why the heliobi are gathered in this abandoned garden instead of seizing human habitations? Team building? Ugh. Because over 1,000 years ago, this very garden was the site of an epic battle between the general of the Luofu and the great heliobus Ignomar. Now that the furnace is broken and the heliobi have escaped, fragments like us, who once constituted Ignomar the whole, have returned here with a desire to challenge the general again. The battle between the general and Ignomar was an earth-shaking contest of devastating proportions. Ignomar underwent countless transformations, causing floods, fires, and thunderous landslides. They were locked in a standoff. And evenly matched? Really? Evenly matched, really? Of course.
Lord's Commission records say that Ignimar was soundly defeated by General Teng Xiao. Of course the human records would flatter their general. The great Ignimar absorbed the power of countless fellow Heliobi, but ultimately underestimated human deceit. We Heliobi could never condense into physical form after that battle. We scattered into fragments and were sealed into the creation furnace. But there's an exception to everything. Mr. Tail, I thought you'd escaped to freedom. Who could have guessed you'd be sealed in this tiny Foxian girl? Humiliating. Sealed my foot? My power was weak when I ran into this fox child. It was bad luck, nothing more. When I was littler, I saw a ball of fire that looked like it was about to turn to embers. I felt sorry for it, so I picked it up and put it on my tail. And then, Mr. Tail tried to eat me! If the judges hadn't arrived, it would have been over! Bah, I did no such thing! You're barely big enough to be an appetizer! All the pain I've suffered since I met you must be retribution for my stupidity back then! Hilarious! It's a pity Mr. Tail didn't devour you. He might have recovered his power and turned the Xianzhou upside down, just like Ignimar did. Do you have a grudge against the Xianzhou? Grudge? How shallow. If you must know the forces behind our actions, there's a pinch of envy. Envy towards the potent emotions you corporeal beings have. Then there's a dash of aggression. The desire to see whether the Heliobi or bodies of flesh and blood are stronger. Lastly, there's a drizzle of desire. We desire to possess your physical bodies, so we can eat, kill, love, and hate. We Heliobi were carefree life forms, but were tainted with the illness of humanity once we came into contact with it. It's humanity's fault for having such intense emotions and desires. Now we can never return to the purity of our past. I want to be free again. I want to return to the cosmos. Mr. Tail, you don't want to regroup with the fragments? You don't want to be her tail forever? Why don't you return with me to the great beyond? Don't get ahead of yourself, Cirrus. That's impossible. Mr. Tail was sealed by the judges of the 10 Lords Commission. He can't escape, and neither can you. Ah! That door just opened on its own! General, after enduring so much on battlefield, I am sure you would show compassion of a wounded fallen soldier. Please break all the civilian bosses as for Barbarian ones. They must remain intact. Okay. तो इस बार blue वाले I feel तोड़ने much हैं. safer with you here. Still feel like I'm gonna faint though. May the Arbiter protect us. अभी हमको blue वाले तोड़ने हैं. red वाले छोड़ने हैं. And यहाँ पे कुछ है. I'm not sure कि ये सही किया ना मैंने. In the side room, please various chests choose. There are various chests to choose from. Please select the least expensive one. अरे गड़बड़ हो गई मेरे से फिर. ये देखा ही नहीं मैंने. There are two things यहाँ. दो चीजें थी यहाँ पे. लीस्ट एक्सपेंसिव मींस जो कि छोटा वाला है वो सिलेक्ट करना है. सेंटर में आई थिंक बड़े वाले रखे हैं. प्रीसियस ट्रेजर हाँ बाहर में आई थिंक बाउंटीफुल वाले हैं. अरे नहीं गड़बड़ हो गई.
बेसिक वाला सिलेक्ट करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बेसिक रखा बीच में। The door will not बेसिक वाला रखा बीच में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दिख ही नहीं रहा वो उनके चक्कर में। अब हो जाएगा। Is it courtesy? Look, there's a mirror behind the. Didn't I see a similar mirror? That sound. What's going on? That voice sounds familiar. Hua, are you in the mirror? Madam Fixtral Garden has been enveloped by an unknown power. We still haven't found Miss Gwen. The task at hand is to save you from this illusion. भाई क्या भूल भुलैया बनाई Are थी we मैंने। above Fixtral Garden? So many bronze mirrors. Could it be that? Not all mirrors are real. You're right, boy. This place is changing. It's trying to stop us from escaping. But one of these mirrors must contain the exit, right? Let's. Listen the voice in the mirror and determine whether it's real or fake. The situation in Fixtral Garden is getting worse. Why have you not left? Is something the matter in there? Over here. That's what, the real Madame Shujha. Are there pretenders inside the illusion? I see. Do not be afraid. Hua knows me well. She will be able to discern me from the counterfeits. But what if... You must trust yourself. But... Let's see. Hua, sweetie. Let's go look at the next... This is the exit, you useless... Construct! Let's go. ये वाला भी नहीं है। एक सेकंड, तीन ही मिरर है क्या यहाँ पे? मेरे को लगा 4 मिरर हैं। हाँ 3 ही मिरर हैं यहाँ पे सिर्फ, which means यही वाला एग्जिट है। The situation in... Over here. What? I see. You must... अभी यहाँ पे वापस मिरर आ गए हैं। वाह भाई। Hurry, Hua. Wait, I want to ask a few questions. What's the relation between Jui and Hanya? Who is Han? Never mind. So... ये नहीं है। Hurry, Hua. Pass... Wait, Hanya is my younger sister, but this... By decree of the Ten Lords, Spiritfarer Hua is skilled and diligent, capable and worthy of official... I still remember the decree... That's her! So... Mirrors again! What a surprise! Come here, Hua. I need to... What do you think about As a judge responsible for capturing criminals, her cowardice is a dereliction of duty. I will reprimand... Huh? Stupid! So... ये नहीं है। Come here, Hua. I need to ask you some... Her caution is a skill, all... That's a... So... अदर मिरर ये वाला ही है पक्के से। Hurry, Hua. I need to ask... She will be... Really? Stupid! An innocent... So... I'm not the best judge of things. Not us. None of them show Madame Straight. That puppet judge never respected me. But she also never let her guard down. I've spent a long time working with Madame Straight. She's always known that I'm scared and timid.
The Ten Lords Commission never cared a wink about your frail constitution. And as long as you don't drag me down, I don't really care how much of a coward you are. Hey, get away! What do you know? The illusion wants to... I think there's a mirror on that floating island. But if... Oh, could I crawl my way there? Quit stalling and get on with it! Ha! I didn't... Hurry, Huahua. I don't want to go back. Everyone is different. It is the... Just... Let's go! मिल गया हमको राइट मिरर भाई इतना ढूंढने के बाद. Are we... You have returned safely. It seems the Ten Lords Commission is not down on our luck today. Madam Shrey, I'm so... Did you encounter anything strange on your way? No wonder she's a judge. I understand. This isn't the time to deal with Cirrus. Fixtral Garden has been dragged into a powerful illusion by an even mightier heliobus, and the Spiritfarers who went to suppress it have lost contact with Huahua. If both Hanya and I are unable to suppress that demon, then... Huh? I won't be able to do it! I'm not as powerful as you two! I always run and hide... Do not underestimate yourself. A heliobus cannot possess a body that is already possessed by another heliobus. Such is your absolute advantage as a judge. I am also possessed too. Do I also get an advantage? Correct. However, Huahua has had many more years of training and is more experienced in fighting heli. That is why the Ten Lords Commission is not down on our luck today. We're lucky. You hear that, scaredy cat? You're the ace of the... The Heliobi are aggressive beings, but they cannot shake their desire for a flesh and blood body. And yet, during the 38 years you have worked for the Ten Lords, you have been constantly able to suppress the monster within your tail and maintain your personality. On that point... Suppress the monster. Oh, but I don't think I've ever had to... Friends! Ugh. Mr. Tail, puny fragments like us were deprived of Ignimar's power long ago. If a little girl can subdue us, then perhaps it's time for some humility. एक सेकंड मेरे को चैट नहीं दिख रही है किसी की आ रही है तो I don't see chat यहाँ पे. हेलो राहुल, वेलकम टू द स्ट्रीम. न्यू अबिस में क्या आ रहा है? कौन सी टट्टी गेम है? आज वेलो खेलकर सर दर्द हो गया लोल. क्या लगता है कौन सी टट्टी गेम है ये राहुल? और मुझे नहीं पता इस बार अबिस में क्या आ रहा है. आई एम ऑल्सो क्यूरियस राइट नाउ. आ गया होगा ऑलरेडी, रीसेट आ गया होगा गेम में. देख सकते हो तुम जाकर राहुल क्या आया है. आई डोंट नो अबाउट स्पाइरल अबिस, तो मैं कल ही देखूंगा. मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली. Though FURINA is powerful, we have a chance of suppressing them if we can break them into You have a sound plan, Your Honor. And since the stage is set, allow me to offer my assistance. Let's find somewhere more... Let's go. मैं तो ये सोच रहा हूँ वो कहाँ चली गई है. लाइक गुनाइफन कहाँ चली गई है? कैवर्न ऑफ कोरोजन खुला है बट दिख नहीं रहा है. ये है क्या नया कैवर्न ऑफ कोरोजन? हाँ यही है. 2 piece increase the damage dealt by follow-up attacks by 20%. When Weirers uses follow-up attack, increases the Weirer's attack by 6% every time the follow-up attack deals damage. So and this effect can be stacked up to 8 times and last for 3 turns. This effect is removed the next time the Wearer uses the follow-up attack. Does आज अभी रीसेट हुआ? हाँ हो गया है सानू अभी रीसेट अभी. Does that means यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं जिनवान का काउंट होता है क्योंकि जिनवान के मल्टीपल स्ट्राइक्स लगते हैं बेस्ड ऑन कि कितने तुम्हारे स्टैक्स बने हैं. लाइक कि 10 बार अगर हिट करेगा जिनवान का वो फॉलो अप अटैक तो यहाँ पे क्या हमको डायरेक्टली मिलेगा ये स्टैक यहाँ पे? अगर मिलेगा तो दिस इज रियली गुड मैं बोलूँगा. प्रिजनर ऑफ डीप कन्फाइनमेंट. 2 piece increases the attack by 12% for every DOT the target enemy is afflicted with. The Wearer will ignore 6% of its defense when dealing damage to it. This effect is valid for max of 3 DOTs. Okay. So basically
टोटल ये 18% डिफेंस क्या कहते हैं इग्नोर कर रहा है. दिस कुड बी रियली गुड फॉर लाइक डीओटी कैरेक्टर्स. काफी सही पीसेस आए हैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट के. It's all yours. Seems this is the place वहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं 10 लॉर्ड्स का मिशन वर्क करते हैं. I guess Sanctus Medicals यहाँ पे रखा है कुछ. बाकी का एरिया बाद में देखेंगे. अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हो आते हैं बिकॉज हमारा वहाँ पे स्टार्ट है क्वेस्ट. A little something for everyone. Cool it. Have you made up your mind? Let's go. इमेजिनरी वीकनेस से पिट जाएंगे ये लोग. टीम मस्ट इंक्लूड हुआ. ओके. आई गेस मेरे हीलर की जगह वही जाने वाली है हुआ बिकॉज सी कैन हील एंड सी कैन रिमूव दीवा वहां पे. You've heard the story of Ignamar and the great Heliobus's glorious fight against the General. They were an entity born of many Heliobi fusing together, but Heliobi are gradually tainted by the emotions and desires of those we possess. We tend to spite each other and don't like to fuse together. It's like having multiple personalities inside a single head. A powerful Heliobus like Ignamar or Furinox might be able to swallow a lesser Heliobus and placate them for a while, but this internal balance is easily broken when exposed to external forces. Just like how we were torn apart and reborn after Ignamar fought the General. Therefore, this might be the way to defeat Furinox. We can cause them to break apart and reduce their power. Then, the Ten Lords Commission can use their sacred vessels to seal up all of Furinox's fragments. I have a question. Why are you betraying your own kin? Why would you help the Xianzhou when we have sealed you for so long? Why? Must Heliobi always have a reason for their behavior? Perhaps I don't want Furinox to devour me. Perhaps I dislike idiots who use force and nothing else. Perhaps I wish to fight the General myself. Or maybe I just want to do a favor for the Ten Lords Commission that will ensure I can leave here in one piece. We should allow Ceres to go ahead. Judges of the Ten Lords Commission always keep our promises. If you can truly deal with the problem at hand, I will ask for your freedom from the Ten Lords. However, I cannot guarantee the outcome of the appeal. Yo, Sunny, welcome to the stream. How conventional. Fine, I accept. But you better keep your promise, puppet. Me and Furinox were furnace mates. I know them well. They're powerful, but as naive as a child, and obsessed with victory. I only need to say 3 things to incite the— Hey! Huh? Let's see. क्या होता है आगे? ये क्या है? Cannot use functionality बोल रहा है. Central console at the moment. Okay, I guess.
FURINA! FURINA! Before you duel the general, why don't you fight me? Serious? What makes you worth my time, weakling? I've turned this garden into my territory and made the dogs of the 10 lords my puppets. As soon as the general arrives, the Heliobi will have a rematch. Why should I fight my own at this crucial moment? That group of amateurs you put together? Ha! They're nothing compared to me. I have already obtained the most wonderful pawn for myself. A piece that once expelled Phantilia. Phantilia? Phantilia! I remember. What a wonderful host. I want it. Then send the Spiritfarers under your control to find me. If you can defeat this nameless I'm possessing, then you can swallow me up and let my strength aid you in your fight against the general. Deal. My pawn... See? Easy peasy. Does that mean all the Spiritfarers out there have fallen? What a useless army. Does that mean we'll be fighting our friends? Oh, do puppets feel empathy? Or do you not wish to defeat FURINA anymore? We Heliobi think of such matters as business transactions. As long as something can bring us victory, we will destroy everything. Even allies and kin. मेरे को लग रहा है कुछ अच्छा कट सीन आने वाला है गेम में, पता है? अगर तुम लोग देख रहे हो तो. Make the decision. FURINA's pawns. Your Please come over here. I need to get... You two, take this before we fight FURINA. This is the Lunambra Gourd, a sacred vessel made by the Artisanship Commission. The 10 Lords Commission has made some changes to it to better suppress Heliobi. After you fight the puppets controlled by FURINA, make sure you seal their Heliobi fragments in here. Also, I'll look after hua. Her time as a judge has been brief. She is still inexperienced. Apart from that, please also have mercy on the Spiritfarers that have fallen under FURINA's control. Mr. Chael, we're gonna fight some really dangerous enemies now. Oh, sounds like someone finally learned to talk tough. I would have believed you if your legs weren't shaking so much. Don't point that out. It took me a lot of effort to be this brave. All this time I've just been hiding behind Mr. Trailblazer. I'm such a bad judge. Madame Strix said those possessed by a Heliobus can't get possessed again. Exactly! You're welcome, by the way. So, what are we waiting for? Let's go! Hua, though I am of Ingenium body, I too am feeling a sliver of fear. Madame Strix? Faced with a demon that can manipulate life at will, of course I'm afraid. Afraid that I won't ever work with my sister again. Afraid or not, we are still gonna beat the heck out Let's of it. go. I will... So we'll need to activate the evil binding matrix, right? Once my task is done, I will meet you at the Verdant Terrace and activate the evil binding matrix at its matrix core. Okay. नीचे जाना है क्या? Defeat the host and collect Heliobus. Okay. पता कैसे चलेगा किसको मारना है? If FURINA is so powerful, why would they allow themselves to break apart so easily? The stronger you are, the more you underestimate your enemies. Sometimes being weak and humble is the way to survive. Those are possessed Wraith Wardens! Don't expect me to hold back. Help me, Mr. Tail! What happened to talking tough? Seize the moment. I see through you. Together as one. The strength. Awaken the world-cleansing dragon.
साला मरे नहीं? Yeah, I'm gonna hold everyone back again. Heavens, break! One fragment is down. Fragments of FURINA have been sealed in the gourd. Thank the Arbiter. अच्छा ये लोग जाने नहीं देंगे, यहाँ पे बॉडी बिछा के रखे हैं इनकी। हमको एक ही रास्ते से जाना है जहाँ से आए हैं। यहाँ कैसे आ गया मैं उतर के, जब मुझे वापस नहीं जा पा रहा था। Infallible. Take your paper dolls out quickly. Do you remember the incantation? Paper to might, carry this fight. Talisman of strength, evil's despite. No matter. Can we talk? Heaven surge. Rise! Yeah! Easy peasy. जहाँ पे वीकनेस नहीं है ना, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है। There are plenty of heliobi in the gourd now. Let's go and meet up with Madame Strix. अच्छा इन्होंने ओल्ड मैप ही इस्तेमाल किया, पता है यहाँ पे। Infallible. It's Madame Strix. There are so many spiritfarers lying on the floor. Trailblazer! Wawa! I'm so glad you're okay. I have defeated all the Spiritfarers controlled by FURINOX. It was quite troublesome taking them down without doing any harm. How goes your task? We're doing well. We've sealed most of... Now, we shall seal the fragments absorbed by the Lunombra Gourd into the evil binding matrix. Once FURINOX's power has been stripped, it will no longer be able to influence reality in Fixtral Garden. This gourd is so pretty! Is this what they call a sacred vessel on the Xianzhou? Miss Guinevere, please be careful. You might feel dizzy if you get too close to the matrix. I think Guinevere is possessed right now. It's okay, it's okay. This is my first time seeing the Ten Lords Commission's exercising tools up close. What? Get her away from her! Cirrus. It's Cirrus. You won. Don't leave us. Help us. Take us to restore Ignimar's glory. Thank you, your honors, for helping me clear so many obstacles and collect so many heliobus fragments. I told you I'd leave your body, little pawn. Excellent. I will keep my promise.
इसलिए तैयार था, पता है। Cyrus cannot be selected or directly attacked. When any other enemy target that have been eliminated, Cyrus will lose some HP. Okay. When Cyrus uses their ability, Rapid Gambit, all enemies will immediately take action. You monster! Time to suffer. All things human creations. 1,000 wonders to raise. Fight as one! Awaken dormant scales. World cleansing dragon. भाई कितना मारेंगे? Forward. Protect me! Protect me! Let's be friends. Converge and awaken! मेरी टर्न ही नहीं आ रही है। Time to suffer. Don't come any closer. भाई what the heck is going on there? Keep forwarding their like turn. Fiends or devils. I'll crush them all. No matter. This demon is quite troublesome. Is everyone okay? They've consumed too many heliobi. We'd die from exhaustion before we managed to weaken it. And we've still got a chance, puppet. Cirrus said it themselves. There's a fragile balance when heliobi fuse together. You know what to do, don't you, Wawa? But... But what? Aren't you gonna be living the life you've always wanted once I'm gone? These pawns are no fun. Why don't you join in too, huh? I struggle being my subject! If you can't win, you just cheat! Useless! Get yourself together! They just won't die! We can't beat them! Not so fast! You've got me, haven't you? See you on the other side. You wretch! What are you doing? Get out! Get out! ये क्या हुआ? We're in trouble now. ये क्या हुआ? हमारे 3 ही बंदे रह गए यहाँ। Awaken dormant scales. World cleansing dragon. 1,000 wonders to Fight as one! Get out! Hey, Cirrus! Why don't you try swallowing me, too, huh? Are you insane? Why are you helping humans? Why? You need a reason? How about this one? I'd rather help a human than a conniving simpleton like you. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Talismans on my... Huahua is also a judge of 10 lords. Commission, I will keep supporting you all with my talisman. अरे fuck, मैंने गलती से नॉर्मल अटैक मार दिया। Welcome, customers. All things human creations. Awaken dormant scales. World cleansing dragon. मैंने गलती से नॉर्मल अटैक मार दिया और गड़बड़ हो गया। Quick divination. Together as one. Time to suffer. Copy. Suppress. सबके ऊपर सीसी रेजिस्टेंस है। Be friends. कुछ
नहीं कर पा रही वो। Yeah! 1,000 wonders to raise your finest one! Heaven surge. Rise! Awaken dormant scales. World cleansing dragon. Yes, I can see down here. Converge and awaken! I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Creations! Wheel of Karma. अरे fuck. Welcome, customers. उसने वापस कैप्चर कर लिया मुझे। Talismans on my command! छोड़ रहे हैं कि यार CC रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी कैप्चर कर लिया। Scale. World cleansing dragon. Heaven surge. Break. It's not. Oh. सुझा जब वेल्किन होगा अगर मैं जीता तो मैं यूरोप अकाउंट में तो आप मेरे को I wonder how Huohua's सब हो doing. जाएगा डाउन गेमर। I should check up on her. इट्स नॉट अबाउट कि तुम कौन से सर्वर पे हो, इट्स जस्ट कि तुम्हारे पास यूआईडी होनी चाहिए हमारी। तुम्हारे पास यूआईडी है तो मैं कर दूंगा सब, उसकी टेंशन नहीं है। Everyone on the CN shows it. The one possessing Huohua seems to have disappeared. Never mind. I've never been good at figuring. Thank you for your assistance. I don't see Judge Hanya anyway. Hanya returned to the Ten Lords Commission after you left. She's coming with the No, the demon lives on. They even possessed a young spirit fair under my command. As starfire essences, the Heliobi will never die. The records in the Ten Lords Commissions, Cirrus lost most of their power and poses no danger for the time being. Thankfully, the Ten Lords Commission had prepared other sacred vessels to suppress the Heliobi. We will construct a matrix all over this abandoned garden and seal the Heliobi within. We can leave the rest to the Ten Lords Commission from here. वैसे भी हमारी तो किस्मत ही टूटी है। नहीं, किसने बोला? Don't even think about sealing me in the Matrix! Oh, you wretched fools! Tail, the judges, you! One day sooner or later, I'll tear you all to pieces! I'll crunch your bones to dust, sap every drop of your strength, and spit you out into the dirt where you belong! Cyrus? Already forgetting me? Your human tongues are no less poisonous than... Kid? As a spirit farer, he's already experienced more than you could in a lifetime. अगर कल साउथ अफ्रीका जीतेगी तो इंडिया का मैच आसान होगा, लेकिन है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आई तो ऐसे ही तैसे करते ही लगता है। अभी से इतना क्यों सोचना डाउन गेमर, कल का कल देखेंगे। For as long as I'm sealed in the Matrix, I will inhabit this body. The judges can stake as many talismans and pour as much enchanted water on this flesh as they'd like. I don't care. As long as they want to save their own. There are many, little pawn. I will exist. I have lived for countless years. I existed before the Alliance was even an idea. And once the Alliance has turned to dust, I will continue to exist for countless more Amber eras. I can wait. I'll wait for humans to let their guard down. I'll
wait till the matrix drawn over Fictional Garden collapses. Time and opportunity will always be on my side. We will meet. I wasn't the only heliobus to escape when the creation furnace was destroyed. There are more of us than the mere few in Fictional Garden. Where are they now? I look forward to seeing how the Ten Lords Commission... Cyrus stares at you in silence. You can tell from their eyes that they are conspiring. Tail! Mr. Tail! अरे डाउन गेम में तो सोचता बहुत है बे हर चीज के बारे में. सोचा कम कर. Enjoy ज़्यादा किया कर. Tail distracted Cyrus. He helped us so much. I can't sense him anywhere. It was because of him that I ended, and I've thought so much about how much better my life would be if I never met him. But now that he's actually gone, I feel so empty inside. सुजय भाई आपको 2000 देगा. स्पाइरल अबिस फ्लोर 12 करो विथ मीका. नहीं करना ना डाउन गेमर. अपने 2000 अपने पास रखे रहो, हमको नहीं करना. I really am useless. I've been looking forward to this day for so long, and now that it's here, I don't feel happy at all. Helioboy don't die that easily. Wait, you're right. Madame Straighty said that Heliobi are eternal flames that will never burn away. Don't worry, Mr. Trailblazer. The Ten Lords Commission contacted Miss Guinaifin's friend, Miss Sushang. I can't leave my post, so, could you let Miss Sushang know what happened? She'll be... अब आरू मैली जानी है वापस हमको. यहाँ पे न्यू कंटेंट क्यों दिखा रहा है? एक्सक्लेमेशन करके. अभी से रिसेट हो गया. रीसेट या हो गया होगा दैट. मैंने नहीं देखा. हेलो ब्रैगर अगेन. लिटिल गुई kinda give me an outline of what happened in Apothecary. Can you tell me more? Thanks for telling me everything. I didn't think things would get so out of hand. I would have been able to help you if I were there too. And maybe little Gwei wouldn't have ended up in the... Oh, you don't need to worry about little Gwei. She won't be able to sit still even in a sick ward. I'm sure she'll come. I'm heading to the apothecary to check up on her. Catch you later. I'm skipping full patch. कर. Dangers in my heart. गुनाइफन का मैसेज आ गया. भाई फिर ट्रेल ब्लेजर मिशन आ गया. ये क्या चल रहा है? वापस ट्रेल ब्लेज मिशन आ गया मेरा. Increase the wearer's max HP by 8% when wearer uses skill. Increase outgoing healing by 16%, lasting for 2 turns. Okay. बुरा नहीं है भाई, लाइटकॉन अच्छा है, पता है हीलर के लिए. लेकिन वही है, ज्यादा स्किल इस्तेमाल करोगे तो ठीक तो है. अच्छा, इसके सुपर इम्पोजिशन वगैरह के लिए ये कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे. पिक्स्ट्रल गार्डन रिलेटेड इवेंट क्वेस्ट आया है. और क्या है? अरे न्यू रीजन कब आएगा यार? नेक्स्ट पैच में है प्रॉब्ली न्यू रीजन हमारा. अभी नहीं रहेगा.
ब्रो कल ये भी करना पड़ेगा, पता है, मेमोरी ऑफ केओस करना पड़ेगा। अभी फ्लोर 9 और 10 दोनों बचे हुए हैं, ये करना पड़ेगा कल मुझे। सिमुलेटेड यूनिवर्स भी करना पड़ेगा क्योंकि बचा हुआ है पूरा। लेट्स चेक कि न्यू आर्टिफैक्ट सेट कैसा है हमारा। हुआ अकेला नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए यूज करा जा सकता है फ्रैगा, क्योंकि आउटगोइंग हीलिंग बढ़ा रहा है, विच मीन्स अगर तुमको अल्टीमेट मारनी है तो उसके पहले ही स्किल मार के प्रिपरेशन कर सकते हो तुम कि ज़्यादा हीलिंग रिसीव करे तुम्हारे टीममेट्स एक्चुअली। अब ना सी कि न्यू कैवर्न ऑफ कोरोजन कैसा है। करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा फ्रैगर, मेरे पास डीओडी टीम है ना, तो मैं करूंगा। नॉट श्योर, पहले मैं लाइक मैं फार्म करके रख लूंगा, भले ही अच्छा लग रहा है, लाइक यूज करके भी ट्राई करके भी देख लूंगा कैरेक्टर्स पे, सोच रहा हूँ। भाई ये एनिमीज गंदा डीबफ लगाते हैं, पता है। I see through together as one. Need a doctor? Commit 1,000 wonders to raise your fight as one. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. Heaven's surge. Rise. Welcome, customers. धीरज बोल रहा था काफी डिफिकल्ट है ये एनिमीज। Grace. What's in your prescription? Better late than never. या बहुत सारे पे यूज कर सकते हैं। लाइट कोन अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ट्रैगर, लाइट कोन बस नहीं है, न्यू आर्टिफैक्ट सेट डीओटी वाला, इवन जो फॉलो अप अटैक वाला है, दैट कैन बी यूज्ड ऑन मैनी कैरेक्टर, दैट्स व्हाई। A quick divination. Converge and awaken. Human creations. Awaken, dormant scales. World cleansing dragon. Component damage. Heaven's surge. Break. I see through you. आई थिंक सीसी डीबफ रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ है मेरे पास अभी करंटली। Suppress. 1,000 wonders. Fight as one. We will come. साले ने आई थिंक डीबफ रेजिस्टेंस हटा दिया मेरे ऊपर का, यप हटा दिया इसने मेरे ऊपर से। व्हाट अ टाइमिंग ड्यूड। Heaven's surge. Rise. Awaken, world cleansing dragon. ये बॉस पता है अनोइंग हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट ये बॉस बहुत अनोइंग हो सकता है अगर चाहे तो। ये लोग ऑटो में देखें। Together as one. Break. ग्राफिक्स में कुछ किया है नहीं क्या? मैंने जब अपडेट आया था पूरा ग्राफिक सेटिंग रीसेट हो गया था। किया होंगे, पता नहीं क्या किया है। No idea. Human creations. एक सेकंड देना, गेम साउंड कम करनी है, काफी ज्यादा है। Rise. किया होगा probably. World cleansing dragon. Fight as one.
damage. Oh, Grace. No matter. Yin and yang. Suppress. Caught in the web. Subdue. ये देखना फंसा बार बार वो कर देती है सीसी रेजिस्टेंस नहीं रहता तो World cleansing dragon. What's in your prescription? क्या हार्ट अटैक से मरोगे मतलब क्या मतलब है The Ten Lords. Rise. Threat raised. Together as one. Human creations. Component damage. Component damage. Component damage. I have no idea मेरी स्पीड कैसे रेज हुई थी टीम की अटैक परसेंटेज मिला है इफेक्ट रेस के साथ क्रिट रेट का वो मिला है और सही है ऐसे फार्म करो तो कभी नहीं मिलेगा ऐसे दे दिया इन्होंने क्रिट रेट का आपने चीख लिया मेरी जी फट गई नहीं चीखा कहाँ था मैंने चीखा था क्या मैंने मेरे को पता नहीं है मैंने चीखा था क्या मेरे को तो याद भी नहीं है कलेक्ट ऑल घोस्ट स्टोरीज विद द घोस्ट हंटिंग स्क्वाड फ्लफी फफी टेल भाई बहुत बड़ा आया है भाई क्या है ये अपडेट में Huh? अच्छा मराओगे हो सकता है गलती से हो गया होगा मेरे से मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने सीरियसली ध्यान नहीं दिया पता नहीं मेरे को याद भी नहीं है मेरा हो जाएगा कल पता है सर फ्रैगर कल मेरा वो पहुंच जाएगा टीएल बढ़ जाएगा कल हो जाएगा 70 मेरा टीएल सी मेरा लिटरली इतना सा बचा है इतना सा कल मेरा टीएल हो जाएगा मैक्स कल रेथ मेडन लेट्स सी साइड हम लोग नहीं गए थे ना होके आते हैं स्पिरिट फेरर ना 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 अभी नहीं करना कल करूंगा मैं ये क्या गाना आ रहा है In order to catch Heliobi on the run, the Ten Lords Commission has devised As divined. Hey, we're Heliobi, not ghosts. ये क्या है ये क्या है ये कुछ क्वेस्ट मिला मुझे हेलो अरिजा वेलकम टू द स्ट्रीम आई थिंक वो हमको हुआ का आई थिंक वो आया होगा ना फ्रेंड क्वेस्ट आया होगा वो होगा नहीं तो ट्रेल ब्लेज अभी खुला है फ्रैगर अभी और
तो वो होगा। हाई एल्डर पे मी अप करके खुला है। रिसीव अ फ्रॉड मैसेज इन फॉक्सियन गार्डन। वाह भाई। Hey, we're heliobi, not ghosts. एंकर अनलॉक हुआ है। दिस इज आई थिंक यहाँ से वापस जाने का रास्ता है। वेट व्हाट द हैक। स्टोरी नहीं है आई थिंक, ट्रेल ब्लेज अभी और है तो वो होगा। यहाँ पे क्वेस्ट वगैरह हैं ऊपर साइड में। भाई ये तुम कहीं भी रैंडमली घुसोगे ना कोई क्वेस्ट में घुसेड़ ही देगा ये गेम। ओनली 10 पुल्स फॉर मी फुरीना। गारंटी है तेरी हरी साहब, ये बता पहले गारंटी है। ये 50 है। The engine people. Just as I thought. As divined. वेट हमारा वीकली बॉस नहीं खुला इससे। मुझे एक चीज जाना है, वीकली बॉस नहीं खुला इससे हमारा। वेट वो ट्राई ही नहीं कर रहा है अगर मेरे ख्याल से फुरीना पुल करने का। वो आई थिंक सार्लेट पुल करने का ट्राई कर रहा है। फुरीना थोड़ी कर रहा है ट्राई। वैसे भी जीत जाएगा बस 50-50। साला गेम नहीं खेलता लेकिन लकी है वो बिना गेम खेले भी। हमारा वो क्या कहते हैं वीकली बॉस नहीं आया इससे। आई एम सरप्राइज एक्चुअली कि वीकली बॉस नहीं आया है। आई थॉट ये न्यू वीकली बॉस ऐड करेंगे। वीकली बॉस ऐड नहीं हुआ वो जिससे हम फाइट कर रहे थे आंख वालों से। आई एम सीरियसली सरप्राइज यहाँ पे। मिल भी जाएगा फ्रैगर, मेरे को पक्का है उसको। मैं वो देखूं, मैं सोच रहा हूँ मेरा मन कर रहा है देख ही लूं कि स्पाइरल अबिस में क्या आया है फ्लो 12 में। द पास्ट 2 months आर नॉट काइंड टू मी एट इन ऑल टर्म्स ऑफ बैनर। Nobody cares, Hari sir, because the banners were already kind to you before that, you know. You already won so many 50-50s. What else you want? वत्स जीत जाएगा, वत्स का मुझे पता है वो जीत जाएगा। कितना भी सोच लो कि हारेगा वो, वत्स जीत ही जाएगा 50-50, मेरे को पूरा विश्वास है। परसों वत्स के अकाउंट में 11 पुल फार्म किए एक दिन में। उसका कुछ भी एक्सप्लोड ही नहीं है, सब तो अर्ली आया है उसका। 50-50 विन भी इतने सारे हैं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके आराम से पुल्स भी आ जाएंगे।
रहन दे हरी सब, चाइल्ड बैनर 50-50 विंस की बात कर रहा हूँ मैं हरी साहब। तेरी 50-50 विंस भी बहुत ज्यादा है तेरी भाई, तेरी धीरज वत्स। इवन आज अब तो तुम्हारे ग्रुप में फ्रैगर भी ऐड हो गया है। सबकी साला 50-50 ज्यादा है, हम ही हार रहे हैं 50-50 यहाँ बैठ के। मुंह देखते रहते हैं 50-50, तुम लोग को 50-50 जीतते देखते हैं हम यहाँ पे सिर्फ। तुम्हारा इवन क्या कहते हैं ड्रैको भी है तुम्हारे ग्रुप में। अर्ली की मैं बात ही नहीं कर रहा, अर्ली तो नहीं भी आए। लेट्स सी क्या आया है उसमें, स्पाइरल अबिस में। Right before Yoimiya, I lost 2 times on weapon banner for Mist Splitter, but you had the pulls ना हरी साहब। तुमने उसका तो देखा ही है, अमन का उस दिन पुल, अमन ने भी तो हारा है फुरीना वेपन के लिए 2 बार, और अभी अब जाके उसका निकला है फुरीना वेपन बैनर पे। ब्लेसिंग ऑफ ऑफिशियल मून, टाइडल मून यहाँ पे। When a character HP increases or decreases, it will be counted when it reaches a total of 12 times. A shockwave will be unleashed at the character's position, dealing true damage to nearby opponents clearing account. One shockwave such can be unleashed every 4 seconds. बहुत ही बेकार बफ है इस बार का अभी इसका। डोंट एक्सपेक्ट मच गाइस तुम लोग अभी इसमें, बहुत गंदा बफ है। लेट्स सी फ्लोर 2 में चेंज किया क्या इन्होंने, कुछ नहीं लग रहा है कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे, सेम ही है बॉसेस। फ्लोर 11 देखें क्या चेंज हुआ है। बेकार बफ है अब इसका, अबिसल मून का इस बार कोई फायदा नहीं है। ओके, स्लाइम, बूपर फ्लावर एंड स्टंट, क्रैप सील्ड, रुइन गार्ड, रुइन डिस्ट्रॉयर, रुइन ग्रेडर, लैक्टर्स विथ हाइड्रोसेमिचुरल। भैंस किया के लोग हमको पता है जला के मारना चाहते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। जो लोग बेचारे फ्लोर 11 तक ही बस कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से, उनको भी ये लोग जला के मारना चाहते हैं। मतलब पायरो अबिस लैक्टर के साथ डेंड्रोसेमिचुरल दे दिया इन्होंने, उनकी किस्मत ही खराब है भैंस की आंख। दूसरे हाफ में प्राइमल कंस्ट्रक्ट है विच आर ओके, बट अरमाइट स्टोन एन्चेंटर है, आई एम नॉट श्योर ये सोलो रहेगा कैसा रहेगा। उसके बाद बैटेरियन फ्रॉस्ट ऑपरेटिव, बैटेरियन विंड ऑपरेटिव हैं, एंड उसके नीचे प्राइमोडियल विथमल विशाप्स हैं, विच इज़ फाइन। आई थिंक ये रिवाइवल वाले नहीं है तो इट्स फाइन, बट दीज टू कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर फ्लोर 11 यहाँ पे, जो लोग का फ्लोर 11 तक ही होता है। जो फ्लोर 11 तक कर पाते हैं ना उनके लिए नाइटमेयर दिया है इस बार, पता है। इस बार लिटरली ये फर्स्ट हाफ में इन्होंने ऐसा रखा है कि वो उनको जला के मार डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मतलब उनको भाई उनको ब्लीडिंग करा के या फिर वो जो भी डीबफ लगाते हैं ना उसके थ्रू मार डालेंगे ये लोग। ऐसा रखा है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में एनर्जी की प्रॉब्लम के हिसाब से रखा है कि एनर्जी प्रॉब्लम हो लोगों को, क्योंकि प्राइमोडियल विथमल विशाप दिया है यहाँ पे। ठीक है मेरे हिसाब से नॉट बैड। टारगेट डिफेंस है क्या, फक टारगेट डिफेंस है। एक्चुअली दिस इज बैड बिकॉज भूपर फ्लावर भाग जाएंगे और पायरो स्लाइम्स एक्चुअली उसको ही अटैक करेंगे तुम्हारे पिलर को, तो दिस इज एक्चुअली बैड यहाँ पे मैं बोलूँगा। टारगेट डिफेंस दिया इन्होंने वापस से। फ्लोर इस पे दिया है, रिफ्ट हाउंड्स दिए हैं, पायरो अबिस मेज है, लार्ज ओवर ग्रो ब्रीचर्स है, अबिस लेक्टर है, डेंड्रोसेमिचुरल है। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, इस स्पाइरल अबिस में ये लोग जला के मारना चाहते हैं हम लोगों को, सच्ची बता रहा हूँ मैं, कसम से बोल रहा हूँ। इतने एनिमी कौन देता है पहले मुझे ये जानना है, वो भी फ्लोर 1 पे। देखो रिफ्ट हाउंड है, कितने टाइप के एनिमी है यहाँ पे। हाँ अरे वो जला के उसको पता है उसकी ऐसी एचपी ऐसे डिक्रीज करते जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भी नहीं कि धीरे धीरे जा रही हो, नहीं नहीं, एक बार में ऐसे मेल्ट हो जाएगी एचपी, इतना डैमेज होता है उनको। ये देखो और कितने एनिमी डाल रखे हैं इन्होंने, देख लावा यहाँ पे रिफ्ट हाउंड डाल रखा है बड़ा वाला, उसके बाद पायरो अबिस में डाला है, फिर उसके बाद ओवरग्राउंड ब्रीचर डाला है, फिर उसके बाद अबिस लेक्टर डाला है, फिर डेंड्रोसेमिचुरल डाला है। भैंस की आंख पूरा जला के मारना चाहते हैं हम लोगों को। उसके अलावा
एल्गोरिथम है विच इज फाइन, विच मीन्स यहाँ पे तुम्हारा हाइपर ब्लूम वर्क करेगा सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में एक्चुअली तुम्हारा कोई भी पता है हाइड्रो डैमेज डीलर पता है बहुत सही वर्क करेगा। तुमको पता है ये मेन टारगेट इसको करना है डेंड्रो सैमिचुरल और लार्ज ओवरग्रोन बीचर को, क्योंकि ये लोग पता है डेंड्रो लगाएंगे तुम्हारे ऊपर तो तुमको वो बर्निंग लगेगी। तो तुम्हारा मेन टारगेट यहाँ पे ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों को मार दिया तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बट पता नहीं 3 फेज है कि 4 फेज है, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये जो होगा डेंड्रो सैमिचुरल के साथ आएगा और ये लार्ज ओवरग्रोन बीचर इसके साथ आएगा अब इस मैच के साथ। तो रिफ्ट हाउंड्स का पता नहीं कितने रहेंगे। तुम्हारी ब्लीडिंग लगेगी यहाँ पे, तुम्हारा लाइक बर्निंग लगेगी तुमको, मतलब पूरा जला के मारेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकंड चेम्बर देखे जरा, हर टाइप के मैक डाल दिए इन्होंने यहाँ पे। फिर से 3 फेज है यहाँ पे आई गेस एनिमीज के। ये दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे और ये दोनों साथ में आएंगे तुम्हारे। और आई गेस ये 3 फेजेस का है यहाँ पे भी। टाइम का इश्यू होगा पता है मेरे को लगता है। और सेकंड हाफ में जेट ब्लूम टेरर्स रूम आया विच मीन्स यू कैन यूज हाइपर ब्लूम स्टिल, बट थोड़ा इनफेक्टिव रहेगा हाइपर ब्लूम बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा थोड़ा ज़्यादा ही। आई गेस मेरे हिसाब से राइडन नेशनल बहुत सही वर्क करेगी सेकंड हाफ में। उसके अलावा अबिस लेक्टर फैदम लेस फिलेम्स, भाई एक और अबिस लेक्टर डाला इन्होंने चेम्बर 3 में। एक और अबिस लेक्टर है भाई, क्या है ये, मतलब क्या है ये, मतलब पहले चेम्बर में अबिस लेक्टर, थर्ड चेम्बर में अबिस लेक्टर, फ्लोर 11 में अबिस लेक्टर, इनको इतना प्यार क्यों आ रहा है अबिस लेक्टर से। उसके बाद कायरागीज हैं, ये पक्का 2 होंगे अबिस लेक्टर, सिंगल नहीं होगा, डबल होगा। ये भी डबल है क्योंकि, और ये फटुई स्लिंगर आई थिंक ये भी डबल होंगे, तो ये भी 3 फेज के एनिमीज हैं प्रोबेबली। उसके अलावा आइस विंड सूट ड्रिज ऑफ कोपोलिया आया है, आई थिंक आइस विंड सूट है ना, डर्ज ऑफ कोपोलिया। आई थिंक दिस इज क्रायो 1, हाँ आई थिंक क्रायो 1 है ये वाला, विच मीन्स राइडर नेशनल स्टिल वर्क करेगी बट यू नीड लाइक somebody who can help you survive ही यहाँ पे, नहीं तो तुम मर जाओगे उसके डैमेज से, बहुत डैमेज होगा यहाँ पे। आई थिंक ये आइस वाला है। Congrats डेथ। हाँ फर्स्ट हाफ हाइपरलूम एक्चुअली वर्क कर जाएगा, लेकिन तुमको हाइड्रो एडिशनल रख के चलना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हाइड्रो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो न्यूलेट इस्तेमाल करूंगा फर्स्ट हाफ में इनको डिमोलिश करने के लिए। सेकंड हाफ में राइडर नेशनल सोच रहा हूँ मैं बता रहा हूँ लोगों को टाइम का इशू आएगा पता है। ये स्पाइरल अबिस डिफिकल्ट नहीं है बट लोगों को टाइम का इशू आएगा बिकॉज एनिमी काफ़ी सेपरेटेड होंगे, स्पॉन होंगे श्योरली, और लाइक आएंगे भी नहीं। जैसे ये फटुई स्लिंगर तुम्हारा आता नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा दूर से अटैक करते हैं फ्लेम लेक्टर वाला, ठीक है। ये तुम्हारा जो है यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है, ये तुम्हारा भाग जाता है तुम्हारे पास से, दूर से अटैक करेगा। उसके अलावा आई थिंक अब इस मेजेस तो आ जाएंगे। डेंड्रो सैमिचुरल दूर से खेलेगा तुमसे और तुमको अटकाएगा, तुम्हारी मूवमेंट को अटकाएगा। सो टाइम इशू आएगा, मेरे को नहीं लगता है वो इशू आने वाला, डैमेज इशू लोगों को, टाइम इशू जरूर आएगा लोगों को, क्योंकि थोड़े टैंकी रहेंगे एनिमीज। बहुत ज़्यादा इन्होंने फेजेस दे दिए एनिमी के। लेट्स सी सेकंड हाफ के एनिमीज कितने टैंकी रहते हैं, बट जिनका फ्लोर 11 तक ही होता है बड़ी मुश्किल से, उनके लिए तो मुश्किल कर दिया। और इन्होंने, मैं बोलूँगा और थोड़ा मुश्किल कर दिया उनके लिए इन्होंने। माई सेकंड हाफ विल भी आया। हाँ तुम आइस विंड सूट के खिलाफ बोले जाओगे ना, क्या कहते हैं, आयाका ले जाओगे ना तुम, सील्ड कैसे तोड़ोगे हरी सब। फिर मैंने आयाका फ्रीज और राइडर नेशनल से किया फर्स्ट और सेकंड, बोला तो राइडर नेशनल सेकंड हाफ बहुत अच्छी रहेगी सानू, सिर्फ थर्ड चेंबर में प्रॉब्लम आएगी तुमको राइडर नेशनल में, फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएगी सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तुम आयाका फ्रीज एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज क्या कहते हैं एनिमीज पायरो वाले हैं, आराम से इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारी आयाका फर्स्ट हाफ में। लेकिन जिनका डैमेज नहीं है, जिनके पास वेपन नहीं है ना आयाका का, उनको थोड़ा डैमेज यहाँ पे वो इशू आ सकता है डैमेज का, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि कितने स्पॉन होंगे ये लोग। प्रोबेबली ये दो होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए और ये 2 होने चाहिए सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये लोग रहेंगे और जितना लेट स्पॉन होंगे ना,
विच मीन्स तुम्हारा इस बार पता है, अगर जिसका पिंग हाई है ना और हाई पिंग पे खेल रहा है, उसके एनिमी लेट स्पॉन होंगे थोड़ा सा, क्योंकि एनिमी का नंबर ज़्यादा है तो स्पॉन लेट होंगे। ऐसा भी नहीं कि तुम उनको अटैक करते रहो। इनकेस दोनों एनिमी साथ में मरे तो दूसरा एनिमी पता है बाद वाला थोड़ा सा लेट स्पॉन होगा, जिसके कारण तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हाई पिंग पे थोड़ा सा इशू भी आ सकता है इस चीज़ में, मेरे को ऐसा लगता है। बट इजीली फर्स्ट हाफ में तुम्हारी क्रायो टीम और एनी हाइड्रो टीम स्टिल आराम से वर्क करेगी। सेकंड हाफ राइडर नेशनल के लिए है। हाइपर ब्लूम कर सकते हो बट जेट रूम टेरेस रूम को डैमेज नहीं होगा, बहुत कम डैमेज खाएगा ये। इसको निकाल लिया तो तुम्हारा सेकंड हाफ हो जाएगा हाइपर ब्लूम से भी। इवन ब्लूम से ही पॉसिबल है बट मैं नहीं करूँगा। मैं प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ब्लूम से करूँगा, सेकंड हाफ सोच रहा हूँ निवलेटिव ले जाऊँ। रेडन कोई क्यों ही ले जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। ब्लैक क्लिफ चल जाएगी सानू, ब्लैक क्लिफ आया का। बट जिनके पास ब्लैक क्लिफ नहीं है उनका सोचो ना, ब्लैक क्लिफ इसलिए चल रही है बिकॉज एनिमी का नंबर ज़्यादा है। एनिमी अगर सिंगल होता तो तुमको प्रॉब्लम होती है आया का यूज़ करने में ब्लैक क्लिफ वाली, लेकिन सिंस यहाँ पे एनिमी का नंबर ज़्यादा है और अगर तुम डिफीट कर पाते हो टाइम से तो तुम्हारा अटैक बफ मिलेगा, उसको शायद तुमको हेल्प करेगा नेक्स्ट एनिमी को मारने में। तो इसलिए ब्लैक क्लिफ चल रहा है, नहीं तो नहीं चलता यहाँ पे ब्लैक क्लिफ। दैट्स दी ओनली एडवांटेज ब्लैक क्लिफ हैज़ राइट नाउ, बट सबके पास नहीं होगा ब्लैक क्लिफ मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, आयाका, काजुआ, शांगलिंग, वैनेट, सील, डीजी। हाँ हाँ, बहुत सही। 5 कैरेक्टर रखोगे ना एक पार्टी में हरी सब। पहले एक पायरोमेज, एक वो छोटकू एंड 1 मेज, 2 बुलफ्लॉट, 1 लैक्टर, 2 गोल वाले एनिमी। गोल वाले एनिमी से संभाल के रहना पड़ेगा, पता है क्यों सानू? वो लोग पता है बर्निंग लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, उनका डेंड्रो अटैक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको पहले टारगेट करना। जितने लाइक डेंड्रो वाले एनिमीज है ना उनको टारगेट करना, नहीं तो मर जाओगे चल के। बहुत जल्दी एचपी जाएगी अगर तुम्हारे पास सील्ड नहीं है तो। दैट्स दी ओनली इशू यहाँ पे। लेलाइन 10 पे तुम्हारा हाइड्रो डैमेज इंक्रीज है, 11 पे तुम्हारा इलेक्ट्रो डैमेज इंक्रीज एंड हाइड्रो डैमेज इंक्रीज है, और 60% का 9 पे तुम्हारा वेपोराइज रिएक्शन का डैमेज इंक्रीज है। इन्होंने फुरीना के हिसाब से ही बनाया है स्पाइरल अबिस, पता है फुरीना के हिसाब से बनाया है इन्होंने, नंबर इसलिए ज़्यादा रखा है एनिमीज का। इस बार मैं यूज़ भी करूँगा, सोच रहा हूँ फुरीना, मज़ा आएगा फुरीना यूज़ करने में। देखते हैं यार ये सब क्या होता है, मेरे को अभी कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये आइस विंड सूट एक्चुअली में तुम्हारा वही होता है कि नहीं होता जो मेरे को लग रहा है? क्रायो वाला होता है या एनिमो वाला होता है? आई एम कंफ्यूज क्योंकि कोपोलिया लिखा है। कपोलस वो होता है तुम्हारा लड़का होता है, कपोलिया शायद लड़की होती है, तो शायद एनिमो है, वो नहीं है तुम्हारा क्रायो, नहीं है सेकंड हाफ वाला। एक्चुअली एनिमो वाली थोड़ी सी टैंकी है और 100 लेवल की तो टैंकी रहेगी। लड़का क्योंकि वो रहता है थोड़ा सा मतलब लेस्ट वल्की है, क्योंकि सील्ड है उसके पास, तो लड़की ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि कपोलिया लिखा है। आई एम नॉट श्योर तो एनिमो वाली होगी, बट मेरे को लग रहा है वो भी हो सकती है, क्रायो भी हो सकता है। कपोलस लिखा रहता है क्योंकि क्रायो वालों पे आई थिंक। लेट मी कंफर्म दिस। लेट मी सी, आई थिंक लड़की होगी। दर्ज ऑफ कोपोलियस लिखा था ना? हाँ, दर्ज ऑफ कोपोलिया लिखा रहता है, नेमेसिस ऑफ कोपोलस होता है। दर्ज ऑफ कोपोलिया, लेट्स सी, साइड ए लिखा है। कर जरा देखने दे कौन आता है। Solidify! Go as one! Wind, hear me! Stabilize!
लड़की है। दर्जोकोपोलस इज लड़की है। Just as I thought. Whose ID is this? Mine or of course Harisaf. किसकी होगी और? लड़की है guys. Floor 12 third chamber में. She is going to be a pain. बहुत डैमेज डील करती है क्योंकि वो, और तुमको अटैक करने जाओगे तो पास से भगा देती है धक्का मार के, तो पेन रहेगा थोड़ा सा थर्ड चेम्बर। तुमको अच्छा हीलर और अच्छा सील्डर लेके जाना पड़ेगा। What? You didn't know हरी साहब कि मेरे पास शाव है? मेरे को लगा तेरे को पता है मेरे पास शाव है। मैं तो यूज नहीं करता बिकॉज ऑब्वियस रीजन कि मेरे पास उसका वेपन नहीं है शाव का। वेपन होगा तो मैं जरूर यूज करता शाव को। बट तेरे को, तू सरप्राइज क्यों है कि मेरे पास शाव है? मेरे को लगा तेरे को पता है। फुरीना का क्या करूं मैं? लेके जा इस पर इसमें यूज कर दे, बिल्ड कर उसको। क्या करेगा? फुरीना को बेंच पे थोड़ी बैठाएगा, निकाला है तो। मैं नहीं यूज करता बिकॉज मेरे पास शाओ का वेपन नहीं है, तो मैं आई डोंट लाइक यूजिंग शाओ बिकॉज बहुत कम डैमेज डील करता है। लाइक आई सेड कि वंस मेरा लाइक वो कंप्लीट हो जाएगा ना, क्या कहते हैं तुम्हारा, लाइक एक बार मेरा शाओ का वेपन मिल गया तो मैं उसको फारूजान भी बिल्ड करूंगा और इसको भी शाओ को भी बिल्ड करूंगा। वैसे शाओ को फारूजान की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि फुरीना है अभी, बट स्टिल मैं बिल्ड अच्छे से बिल्ड करूंगा फिर शाओ को और थोड़ा फुरीना को। बट आप जब मिलेगा तब की बात है। बोला है फ्रैगर में निकल ही जाएगी उसकी। आई एम नॉट सरप्राइज उसको मिल गई है। चलो गाइज अभी मैं 2:30 हो गए, मैं जा रहा हूँ सोने। कल देखते हैं। कल सोचूंगा कल स्पाइरल अबिस करना है का सोचूंगा मैं, पता नहीं कंफर्म नहीं है, बट देखते हैं कल स्पाइरल अबिस अगर मन करेगा तो करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन ऑन द स्ट्रीम। कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड स्लीप एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं विथ जेंशिन इम्पैक्ट अगेन। बाय बाय, गुड नाइट सभी को।